हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। कोविड की राहों में हम लाइव आए हैं क्रिप्टो करेंसी को डीमिस्टिफाई करने के लिए। सीनियर एनालिस्ट टोकन मैट्रिक्स पे मेहदी फारूक, इनको ईएन की पॉडकास्ट पे मैंने देखा और फौरन मैसेज किया कि हमें भी आके जरा क्रिप्टो की दुनिया समझाएं। कैसे हैं मेहदी सर? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल जबरदस्त। सब लोगों ने सवाल तो यही पूछे हैं कि अमीर कर दें हमें। हम वो दे दें अपना डिस्क्लेमर कि कोई फाइनेंशियल एडवाइस हम नहीं दे रहे, कोई हम नहीं कर रहे, हमें मत सू करना तुम लोग। बट यू डन मास्टर्स इन डिजिटल करेंसी एंड ब्लॉकचेन। Yeah, so I did a master's in finance and investment. अभी मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया से ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसी में. सो I'm working and also doing that. So मैं खुद CFA कैंडिडेट था, वो मैं छोड़ के अब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि I think this is a once in a lifetime opportunity, and I think if you understand deeply from first principle, it's one of the most lucrative, both intellectually as well as financially, opportunity out there at the moment. इस इधर से ही शुरू करते हैं, सिंस आपने ये अपनी एक हाइपोथेसिस दे दी है। व्हाई डू यू बिलीव इन दैट? There are a lot of reasons. एक नहीं, बहुत सारे reasons हैं. Firstly, I think the first idea stems from decentralization. I think this is a very very powerful concept, and let's just decode this. तो आजकल की हम दुनिया में देखते हैं, let's take insurance for example. Let's say मैं insurance ले रहा हूँ. So there is a मैं आपको insurance के पैसे दे रहा हूँ, सही है, and there is a pooling going on. और वो जो पूलिंग हो रही है, लेट्स से एवरीबॉडी इज गिविंग अ प्रीमियम टू गेट सम इंश्योरेंस, वो सारी पूलिंग जमा कर रहा है एक इंटरमीडिएरी, एक मिडिलमैन. वो 10%, 15%, 20% कमीशन लेता है. प्रोसेस को और इनएफिशिएंट करता है. 10 दिन का डिले भी हो सकता है, क्योंकि वो आपसे पैसे इकट्ठे कर रहा है, उससे कर रहा है. वो एनालिसिस कर रहा है एक्चुअल के जरिए कि भाई रिस्क क्या हो सकता है, रिटर्न क्या हो सकता है, और वो उसका पहला मकसद ये कि मेरे 15%, मेरे 20%, मेरे 10% मेरी बैलेंस शीट में रहे. सो लेट्स से कोई क्लैमिटी हो जाती है, उसके 10-15% नहीं बनते, तो फर्स्टली तो वो कंपनी भी डूब सकती है, और जिसको जरूरत है पैसों की वो शायद उनको ना मिले. सो दिस इज द इशू. देयर इज अ बिग इशू कि पूरी दुनिया में देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स वेयर वी हैव मिडल मैन. तो ब्लॉकचेन है वो मिडिल मैन को डिस्टर्ब कर रहा है. यू कैन हैव एंटिटीज एंड यू कैन हैव प्रोजेक्ट्स वेयर यू डोंट रिक्वायर एनी मिडिल मैन एट ऑल. आई थिंक दिस इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, बिकॉज जो ब्लॉकचेन का फर्स्ट प्रिंसिपल है, इट्स ट्रस्ट मिनिमाइजेशन. हम दो आपस में ट्रांसैक्शन कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं, एंड देन देयर डजंट नीड्स टू बी एनी ट्रस्ट बिटवीन अस. सो आई वुड से दिस इज समथिंग सिमिलर टू, लेट्स से, जब शिपिंग ईजाद हुई थी, लाइक लेट्स से वी फर्स्ट इन्वेंटेड शिप. तो जब शिपिंग ईजाद हुई थी, फर्स्ट यू डिड ट्रेड, then you had second order, third order effect. The second order, order effects were globalization started happening. Because of globalization, human capital increased. Human capital की वजह से internet ईजाद हुआ, internet की वजह से बहुत सारी wealth creation हुई. So I kind of see this as a first step where we see amazing and different applications across the whole vertical, across different sectors, where जहाँ पे ट्रस्ट मिनिमाइजेशन की जरूरत है, या जहाँ पे मिडिल मैन अननेसेसरीली इंटरवीन कर रहा है, वो वहां से रिमूव हो जाएगा. क्योंकि शायद लोगों के थोड़े सर के ऊपर से गुजर जाए, कॉन्सेप्ट्स में तो अच्छी लगती है डिसेंट्रलाइजेशन, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। बट ये जो P2P, सिंस यू हैव अ मास्टर्स इन ब्लॉकचेन एज वेल, मेरे जैसे जाहिलों को अगर समझाना हो कि ये जो P2P पे होता है या डिसेंट्रलाइजेशन होता है, what does this mean? It just means there are different nodes everywhere and they communicate peer to peer as opposed to a central authority who verifies transactions. सही है. तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ. सो लेट्स से एप्पल है. एप्पल का बिजनेस मॉडल क्या है? सेल आईफोन, सेल मैकबुक. जो ब्लॉकचेन है उसका बिजनेस मॉडल है टू बेसिकली सेल ब्लॉक स्पेस, एक ब्लॉक स्पेस. नाउ वो जब ब्लॉक स्पेस बेचते हैं तो इशू ये होता है, यू हैव डिफरेंट इशूज. यू हैव वन इशू इज लाइक लेट्स से हम एक ब्लॉक स्पेस बेच रहे हैं, and because of decentralization we want different parties that do not know each other to agree on this. So you have issues regarding scalability, you have issues regarding decentralization and all of that. So मेरा बोलने का मकसद ये है कि P2P is just one application, and this is the fastest application कि let's say मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको पैसे भेज सकता हूँ, and we have this stored on a blockchain. और आप देख सकते हो कि 3 सेकंड में मैंने आपको पेमेंट दे दी, 50 नोड से उसने वेरीफाई कर ली कि मैंने अपने वॉलेट से निकाल के आपको दी, आपके वॉलेट में पहुंच गई. एंड दिस इज इम्यूटेबल. इम्यूटेबल से मुराद कि रिवर्स नहीं हो सकती. मैंने ये कर दिया, आपको ये मिल गया, एंड वी हैव अ रिकॉर्ड, एंड वी डोंट हैव टू ट्रस्ट ईच अदर.
And now if you take this not trusting each other and build up a whole financial system, उसमें बैंकिंग आ जाए, इंश्योरेंस आ जाए, उसमें गेमिंग आ जाए, उसमें आर्ट कलेक्शन आ जाए, एंटरटेनमेंट आ जाए, सोशल मीडिया आ जाए, सो यू बेसिकली हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के एक तो मिडिल मैन नहीं है, और जब मिडिल मैन नहीं है उसकी जो कमीशन है, उसके जो रेवेन्यू है और वो चीज़ें वो हम आपस में भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. सो नॉट ओनली you are a user, but you're also an investor automatically since you're doing all of that. तो आप अगर कह रहे हैं कि उसका जो कमीशन है वो बच जाता है, बट सारा डिस्कशन तो अभी यही है ना कि गैस फीस इतनी ज्यादा है कि इस वक्त जो है वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है ब्लॉकचेन पे सारे ट्रांजैक्शंस करना. आपका बिल्कुल दुरुस्त क्वेश्चन है. मगर जो गैस फीस का इशू है, that initially starts with Ethereum. So let's go back to this example. ब्लॉकचेन का बिजनेस है ब्लॉक स्पेस बेचना. जब वो ब्लॉक स्पेस बेचते हैं, सो दे हैव 3 इश्यूज. कितना डिसेंट्रलाइज है, कितना सिक्योर है, कितना स्केलेबल है. तो इथेरियम ने फॉर एग्जांपल चूज किया ट्रेड ऑफ्स में कि हमें सबसे दुनिया का सिक्योर ब्लॉकचेन बनना है और सबसे डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बनना है, कि 2-3 हज़ार लोग ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बेसिकली मैनिपुलेट द होल नेटवर्क. तो उन्होंने ये 2 ट्रेड ऑफ सेलेक्ट किया. Now the new blockchains coming up, for example Solana, वो बोलता है चलो डिसेंट्रलाइजेशन इतने नहीं हो, 2000 लोग नहीं हो, मे बी 500 या 1000 लोग हों, मगर स्केलेबिलिटी पे फोकस करते हैं, सिक्योरिटी पे नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन पे इतना नहीं, और वो इतना स्केलेबल है कि यू कैन डू 100,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, which is faster than Visa and Master, and the gas fees that will emit will be 0.1 cent. So you already have that issue solved. तो different blockchains बन रही हैं with different characteristics. And interestingly, Ethereum ने ये हर 2 दिन में खबर नहीं आती कि जी सोलाना का नेटवर्क बैठ गया. जी. तो यही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. तो वो उतना स्केलेबल है, उतना सस्ता है कि इट्स इजियर फॉर स्मार्ट पीपल, जैसे हमारे ऑडियंस में उन्होंने बॉट्स बना लिए. वो बॉट्स क्या करते हैं, नेट को स्पैम करते हैं. सो लेट्स से एक NFT रिलीज हो रही है, और NFT रिलीज हो रही है. जो बॉट्स है 10 लाख बॉट बेसिकली डिफरेंट सर्वर्स पे बना लिया. वो बेसिकली अटैक करे कि सबसे पहले NFT मुझे मिले, क्योंकि सस्ता है, 0.1%, उससे भी लेस होता है. तो वो जो स्केलेबिलिटी है वो उनके खिलाफ जा रही है कि इतना ज्यादा स्केलेबल, इतना चीप है कि यू कैन बेसिकली डू अ स्पैम अटैक. तो वो उसके भी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो उसका भी सोल्यूशन ढूंढेंगे. आई थिंक इवेंचुअली वो थोड़ा सा शायद रोल अप के मॉडल पे चले जाएं, या वो जो लीडर है उसको किसी तरीके से छुपाएं, ताकि जो स्पीड है वो और थोड़ी तेज हो जाए, तो ये जो स्पैमिंग का इशू है वो खत्म हो जाए. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एवरीथिंग इज हैपनिंग, यू हैव डिफरेंट मूविंग पार्ट्स. थिंक ऑफ इट लाइक दिस. हम अभी जैसे इंटरनेट के 90s के एरा में, हम 2020 में नहीं है. इट्स स्टिल गोना टेक कपल ऑफ डेकेड्स. वी आर वेरी वेरी अर्ली. इतने हम अर्ली हैं कि अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले आउट नहीं हुआ. समझे, हम आप बैरियर टाउन चले जाएं, बैरियर की सिर्फ जमीनें हैं, बंगले भी नहीं बने, कुछ भी नहीं बने. तो हम उस सिचुएशन में अभी at the moment people are speculating कि भाई ये है. we are at the stage where अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और कभी कभार ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से पहले बहुत सारी चीजें रिलीज हो जाती हैं. सो फॉर एग्जांपल मेरा ये टेक है मेटावर्स का. आई थिंक 10 साल बाद, 15 साल बाद ये बड़ी जबरदस्त चीज होगी, मगर मार्केट ने इसको अभी से हाइप अप करना शुरू कर दिया है for good reasons. So आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, मेटावर्स आ गया, तो these are some of the complications that are happening. But nonetheless, I feel like it's one of the most lucrative sectors to be in if you can kind of understand, and not just to speculate. एक मसला इस इंडस्ट्री का ये है कि जहाँ पैसा है, डोज ले लो, शिबा ले लो, ये ले लो, वो ले लो. I think उसके अलावा भी there is a lot of innovation happening. आई एम ग्लैड मैंने आपको आज बुलाया इसीलिए कि हम जब भी क्रिप्टो का सुनते हैं ना, इट्स इजी विन, पैसे मिल जाए, स्कीमें, उसके अलावा लोग सोचते नहीं है. दिस व्हाई आई रियली वांट टू डिस्कस ब्लॉकचेन विद यू. सैयद जैदी चैट में आज कह रहे हैं कि आज यूएसए में एमएलके डे है. सलाम पेश करते हैं हम एमएलके को. मुकेश पैनिकर कह रहे हैं नाउ आई नो हाउ माय पेरेंट्स फील अबाउट टेक्नोलॉजी. सब ऊपर से जा रहे हैं. चलिए हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, जरा शायद पीछे चले जाएं तो समझने में आसानी हो जाए. हमारे जो सरकार हैं सतोशी भाई, जब उन्होंने व्हाइट पेपर बनाया, so there was a financial crash. I think if we can talk a little about that, कि वो जो financial crash था और institutions का bailout था, किस तरह उसने sort of inspire किया. Am I right in saying कि that sort of inspired Satoshi to think of a way कि ये जो hedge funds हैं और Wall Street है,
ये ना कंट्रोल करे सारी दुनिया के फाइनेंशियल्स, एंड इट जस्ट सॉर्ट ऑफ द पावर गोज टू द पीपल. To a certain degree, I think जब white paper आया था, I don't think Satoshi either individual as a team, उसने उस वक्त white paper लिखा था. I think he was thinking about all of these things 6-7 years back. It doesn't happen overnight. But whoever that individual was, उसके बिल्कुल एक different way of thinking था, that he just didn't trust the system. Because in order to create this consensus, Nakamoto consensus, जो हम Bitcoin में देखते हैं, it's very different from classical consensus we see, जो आजकल Facebook और Amazon के आपके front end पे होता है, back end पे होता है. It's very different. What he basically had in mind was कि we need a lot of validators, like a lot of validators, मुराद कि बहुत ज़्यादा widely distributed network हो, and none of the जो nodes हैं, मतलब आपस में जो लोग हैं, they don't trust each other at all. हमारे जो सिस्टम फास्ट होते हैं उस वजह से होते हैं कि देयर इज दिस अजम्पशन, ये जो कंप्यूटर के बैक एंड पे होता है, ये अजम्पशन होता है कि लेट्स ट्रस्ट. वो बंदा उसका फर्स्ट प्रिंसिपल से ही वाज लाइक no trust, there shouldn't be any trust involved. So he was somebody who's very suspicious, very smart, maybe there is a team behind it, so he was always suspicious. I think जो 2008 का क्रैश हुआ था, it could have played a part. I don't think so, because I think 1-2 साल में उसने वो white paper नहीं लिखा होगा. I think it's a very because he brought in a lot of different primitives from economics, computer science, and cryptography. I don't think it's possible to just jumble it all together in 6 months or 1 year. But let's just talk about the crash. I think crash was one thing where probably catalyst हो गया होगा. I mean, he was probably thinking about those things for years. But उसकी जो जरूरत या immediacy कि उसको पेश हुई कि यार इस वक्त ये चीज जरूरी है, maybe that sort of was a catalyst for that. Yeah, potentially, yeah, हो सकता है. And I think that crash taught the world के what is money, like what is currency, what is money. It's just confidence और हवा में होती है, and that's why in crypto you have this money hype देखा है मैंने. I don't know if you've seen the latest season, but उसमें उसका conclusion यही होता है कि क्या है गोल्ड, कुछ भी नहीं है ना, बस एक वो भरोसा है कि ये गोल्ड है. yes. So आपके रिजर्व में गोल्ड नकली भी पड़ा हुआ है, मगर लोगों को ये पता है कि गोल्ड है. It's there. So this is the primitive actually of cryptocurrency. मैं थोड़ा सा बाद में उसको एसेट की तरह भी डिस्क्राइब करूंगा, but let's just decipher it as a currency. So what is currency at the end of the day? So basically, let's say it's trust between two people, right? Let's say हम community बना लेते हैं 150 लोगों की, 200 लोगों की, and let's say शहजाद, अगर आप कोई काम करते हो, मैं आपको एक पत्थर देता हूँ, सही है, तो आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे आपके पास उतने ज्यादा पत्थर होंगे. हमारी कम्युनिटी में we have decided this पत्थर will have a utility, will have power. That's money. At the end of the day, currency money is nothing but confidence between the people within the community, between 2-3 people or whatever. Check, did I lose you? Check. नहीं, I'm still here. नहीं, वो लोगों के सवाल आते जा रहे थे. तो money only has value because we agree that it has value, और gold only has value that we agree that it has value. So जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बस it has value because we agree it has value, isn't that all currency ever? Yes, literally all currency ever. Doge doesn't have anything, but people think it has value, so it has value. Will Pakistan actually ban, ये आपने पढ़ी है खबर कि हम as usual जिस तरह हमने YouTube भी बैन कर दिया था उठाकर, कोई भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है, इनोवेशन आती है, हम उससे इतना डर जाते हैं. Even though I'm convinced हमारे bureaucrats जो हैं और politicians जो हैं, they're probably heavily invested in as well. But what are your thoughts of Pakistan's government's idea to ban cryptocurrency and blockchain? Horrendous, horrible, but I think it's twofold. मैं प्राइवेट साइड ऑफ मार्केट्स में भी रहता हूँ. टोकन मैट्रिक्स हैज अ वेंचर कैपिटल आर्म, तो हमारे पास बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स आते हैं टू पिच क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स. सो वन थिंग आई सॉ वाज, हमारे पास दुनिया जहां से लोग आ रहे हैं, लाइक क्लेवर ब्लॉकचेन इंजीनियर्स, clever entrepreneurs basically trying to make a difference in the world, and it was very saddening to see कि पाकिस्तान से इतने नहीं आ रहे थे. Like we didn't see many. We saw a lot from India, but we didn't see many in Pakistan. Whilst on the other hand, when it comes to speculation, आप Telegram के trade signals देख लें, वकार ज़का की ऊंची आवाज देख लें, people are speculating, but they're not developing the ecosystem, they're not taking one thing ahead. मेरे ख्याल में मैंने 150-200 कॉल अटेंड की होंगी
पिछले 2-3 महीने में, आई थिंक आई सॉ वन पाकिस्तानी, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया था, काटा इनू was a Doge, basically Shiba Inu की वीडियो गेम का version. So and he wasn't the developer. He was basically doing the managerial tasks in terms of like being a CEO. So this is another thing कि हमारे पाकिस्तान में people are not just thinking about making stuff, pushing it forward. And I think this will be a very sad, like हम इंडिया से compare करते हैं, इंडिया वालों ने blocked Bitcoin को ban किया, and there's a good reason for that, but वो different coins को ban नहीं कर रहे because they want the entrepreneur वहाँ पे हैं to basically make projects, take this forward because there's a lot of money coming in. अब दुबई में जाएं, दुबई में they are trying to regulate it, वहाँ पे बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ वहाँ की गवर्नमेंट ने, यूएई की गवर्नमेंट में, आओ हम आपसे टैक्स भी नहीं लेंगे, आओ आपको जो करना है करो. सो लॉट ऑफ वेंचर कैपिटल people are going there. I think हमारी गवर्नमेंट ने इस इनोवेशन को स्टाइफल इसलिए किया है बिकॉज हमारे रिजर्व में इतने डॉलर नहीं पड़े हैं, and basically it makes it easier for people to do two things. Let's say if they lose confidence in PKR, they can easily convert it into dollar and send it to other people. And the second thing is our infrastructure is so weak that our government and our financial structure cannot handle the KYC and AML. So even though Binance में KYC और AML anti-money laundering करवाते हैं और कस्टमर की सारी चीजें होती हैं, I don't think we have check and balance कि हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उनसे चीजें वेरीफाई करें. तो इन दो चीजों की डर के मारे उन्होंने बेसिकली ये किया है. बट आई डोंट थिंक वो 10 साल 20 साल का आगे का सोच रहे हैं. And I think partially our public is also to be blamed. हम innovation नहीं कर रहे, उसको हम आगे नहीं ले जा रहे, we are just speculating, पैसा बाहर भेज रहे हैं. So I think on the other hand, if we had those things developing, I think शायद हमारी गवर्नमेंट होती, उनको थोड़ा सही होता है, नहीं भाई यहाँ पे पैसा बन रहा है rather than जा रहा है. थोड़ा डिग डीप करते हैं, बट पहले जस्ट द मेन जो चीज है, आप कह रहे हैं बाइनेंस कर सकता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और बाइनेंस वेरीफाई भी करता है. सो व्हाई डोंट वी डू दिस कि जी अगर बाइनेंस पे जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं 1% बाइनेंस लेता है, गवर्नमेंट बाइनेंस को बोले अगर आपने पाकिस्तान में ऑपरेट करना है 1% आप मुझे भी देंगे. सो इफ द गवर्नमेंट स्टार्ट्स मेकिंग 1% ऑन एवरी सिंगल बाइनेंस ट्रांजैक्शन that's verified through Binance and Binance pays the government of Pakistan, wouldn't that be brilliant for them and brilliant for people in Pakistan who will also know कि एक regulated market है? Potentially, yeah, and not just Binance. Why stop at Binance? Let's say मैंने Dogecoin से $10,000 कमाए 1000 डाल के, आप मुझसे 20% टैक्स लो. यूएस ये करता है. That's why people basically run off to Malta, run off to Dubai, because वो आपसे टैक्स ले रहा है. And there are various services that basically make it possible for you to tax. Another एक और चीज लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में ये नहीं पता, it's one of the most transparent things. आप हर चीज चेन पे रिकॉर्ड है, तो किसी को टैक्स वेरीफाई करना है या केवाईसी करना है, it's not that difficult to do it. So हाँ, बाइनेंस से ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? मगर आई थिंक बाइनेंस की थोड़ा सा इशू ये है उसका टैक्स स्ट्रक्चर का. आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने टैक्स स्ट्रक्चर बनाया है, केमन में है, केमन से बन के वो सिंगापुर पे जाते हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ चेज देम. तो एक ये इशू है. मगर जस्ट व्हाट इज टर्की डन? टर्की ने अभी कोई लिए है ना 7-8 बिलियन बाइनेंस से, या उनको फाइन किया है? Do you know what happened there? There have been few countries that have fined them. Binance को इतना साफ सुथरा नहीं है. Binance has also done a lot of weird things. Not just on that front. Let's also talk about innovation, right? So let's say COVID आया था मार्च में, right? मार्च 2020 में. So Binance ने एक चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, सिंथेटिक स्टॉक्स. लेट्स से मैं पाकिस्तान में हूँ, मुझे टेस्ला खरीदना है, मैं पाकिस्तान से टेस्ला नहीं खरीद सकता. लेट्स से मेरे पास बाइनेंस का अकाउंट है 2020-21 में, मुझे टेस्ला खरीदना है, मैं सिंथेटिक टेस्ला खरीद सकता हूँ, और उस पर भी वो 2-3% कमीशन कमा रहे थे. सो सिंथेटिक टेस्ला क्या है? बाइनेंस के पास टेस्ला के शेयर्स नहीं है, मगर वो उसकी प्राइस मूवमेंट को मॉनिटर कर रहा है. तो लेट्स से टेस्ला $300 का है, तो बाइनेंस पे आप $300 का खरीद सकते हो, और वो 305 का हुआ तो आपका मुनाफा, 200 का हुआ तो आपका नुकसान, और 2% उनकी कमीशन. सो दे हैव डन सम फंकी स्टफ. दे हैव बेसिकली दे आर इन इट टू मेक मनी. वो वॉल्यूम से भी कमाते हैं, इनोवेशन से भी कमाते हैं, एनएफटी से भी कमाते हैं. सो वो इतने साफ सुथरे नहीं है. एंड प्लस मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस देता हूँ, उनके जो एचआर वाले हैं वो भी इतने साफ सुथरे नहीं है. वो लेट्स से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपसे रिसर्च करवाएंगे, सही है,
और वो रिसर्च इसलिए नहीं करवा रहे, उनको एनालिस्ट की जरूरत है, वो आपसे रिसर्च कभी कभार इसलिए भी करवाते हैं ताकि उनके खुद के एनालिस्ट को फायदा हो जाए। सो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आप इट्स अ कह रहे हैं चाइनीज वो एक कंपनी। कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशन है। सो ये तो सारी कंपनियां करती हैं अपने मुनाफे के लिए ऐसी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट्स अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। आई थिंक ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। इवेंचुअली एंड गोल क्या होगा? एंड गोल मेरे ख्याल में ये होगा, लाइक we won't have exchanges like this that misbehave. Either we'll have decentralized exchanges जो अभी से DeFi में हो रहा है, so you don't need a central party to kind of monitor buyer sellers के दरमियान, you can have a decentralized exchange. I think eventually हम वहाँ पे जाएंगे। मगर Binance और भी चीजें करिए, Binance का इतना strong venture arm है, and मैं आपको यहाँ पे भी एक इनकी मोनोपोली बताता हूँ। so जितनी भी बड़े प्रोजेक्ट, सेक्सी प्रोजेक्ट क्रिप्टो के आ रहे हैं, उसकी फंडिंग बाइनेंस करता है और फिर खुद के एक्सचेंज में लिस्ट करता है। सेम विद कॉइनबेस, सेम विद गेट, सेम विद क्यूकॉइन। इनके खुद के वेंचर आर्म है। अच्छे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करो, बनाओ, लिस्ट करो। 20 मिलियन का प्रोजेक्ट खरीदा हुआ है, उसको 5 बिलियन का करके रिटेलर्स को पकड़ा दो। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट्स आल्सो ये जो हैपनिंग इन द स्पेस। जैक भाई जो है हमारे ट्विटर वाले, जी। उन्होंने जो अभी रिसेंटली ट्वीट किया था कि आप सब झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, डिसेंट्रलाइज है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है दे विल ओन वेब 3.0, सो दिस आइडिया दैट एवरीबॉडी विल ओन वेब 3.0, ये आपको झूठ पार्शली बेच रहे हैं। सो पार्शली व्हाट्स योर यस। टेक ऑन दैट? Partially, yes. I think सारी innovations के साथ ये होता है, you kind of need a VC, but partially, yes. I can tell you from my own venture experience as well कि मैं token metrics में काम कर रहा हूँ, अभी उनका फंड बढ़ रहा है, मैं बहुत सारे different syndicates और DAOs में भी हूँ। इतनी asymmetry है, let's say एक प्रोजेक्ट 10 मिलियन वैल्यूएशन पे आया हुआ है, आपने इस पे इन्वेस्ट किया, वो जब एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया, क्योंकि क्रिप्टो की इतनी हाई पे इतने सारे रिटेलर्स हैं, वो 150-200 मिलियन का 2 दिन में हो जाता है। सो यू आर मेकिंग 20-30x एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट और एज समबडी हु टेक्स पार्ट इन दिस विदाउट डूइंग एनीथिंग। आपको 30-40x मुनाफा मिल रहा है, और आप अपने बड़े वाले बैग्स रिटेलर्स को पकड़ा रहे हैं, जो वो जो खुश हो रहे हैं। एक रिटेलर फिर अपना बैग दूसरे को पकड़ा देता है 50% प्रॉफिट पे, मगर दे नॉट सीइंग दैट मेजॉरिटी ऑफ द मनी एट द मोमेंट इन क्रिप्टो इज बीइंग मेड बाय वीसी। सो मैं खुद पहले मसारी पे काम कर रहा था, इट्स वेरी रेप्यूटेबल रिसर्च कंपनी, मगर मैं टोकन मैट्रिक्स में इसीलिए आया क्योंकि आई वाज लाइक यू नो व्हाट, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू बी मेड इन वीसी। मैं जब हेज फंड में अपने बॉस के साथ काम करता था, ही मेड लाइक few of his investment did 110-120x as an angel investor, as a VC, and that kind of inspired me कि मैं token metrics के side पे आऊँ। So there is थोड़ा controversial होगा, but there is a partial truth to it. But apart from that, कुछ हैं projects that basically say fuck the VCs, हम सारे community को airdrops करके decentralize कर देते हैं, and there are certain projects उनकी ethos अच्छी होती है, वो token allocation 5 से 10% से ज़्यादा VCs को नहीं देते। So it's mix of both. Jack भी अपनी जगह पे सही है, मगर those who are criticizing him वो भी सही हैं. But I think this is part and parcel of innovation. ऐसा होता रहेगा, and then we'll come to an equilibrium where people will be like, you know what, कि हम इस space में हैं कि VCs are not dominating, and we are also in a space that innovation is also getting funding. तो अगर मैं एथिकल मॉरल डिलेमाज में नहीं पढ़ना चाहता, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं देखता हूँ 2 कॉइन्स आ रहे हैं, एक वीसी बैक्ड है, उसमें अच्छे अच्छे जो वीसीज हैं उन्होंने बैक किया हुआ है, और दूसरा जो है मैं जानता भी नहीं हूँ, अननोन लोग हैं, बट वो 5x 10x करता जा रहा है। वुडंट इट बी बेटर फॉर मी कि यार ये जो वीसी बैक्ड है, मुझे पता है ये लोग कौन है, इनके फेसेस हैं, मेहदी है टोकन मैट्रिक्स पे, इसके पास वो है, सो लॉन्ग रन में दिस इज विल बी बेटर देन समथिंग दैट्स डूइंग 40x लाइक स्क्विड टोकन, बट वो जब अननोन पीछे लोग हैं तो वो कल जीरो भी हो जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। Yes, so this is the part and parcel of crypto. So आप जब क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करते हो, मैं आपको यहाँ पे अल्फा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो लोग ये कर रहे हैं प्लीज ये नोट डाउन करें। तो मेरी जो थिंकिंग ये है कि हम लोग अगर किसी प्रोजेक्ट को बैक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई कौन से VCs इन्वॉल्व हैं। देयर आर फ्यू VCs in crypto, let's say Delphi, Pantera, A16Z. These are credible VCs that have funded projects that have done amazingly well. और वो सिर्फ फंडिंग नहीं करते, they go out of their way to add value. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हेल्प कर दी, कनेक्शंस के जरिए हेल्प कर दी, लिस्टिंग एक्सचेंज लिस्टिंग में हेल्प कर दी, एडिशनल फंडिंग राउंड में हेल्प कर दी. So when you know that these VCs are funding, you have this confidence. And the other thing is that VCs do not
हम क्रिप्टो में इतना अर्ली हैं, VCs आर जस्ट बैकिंग आइडियाज एंड एंटरप्रेन्योर्स. सो आप अगर VC को देखते हैं एंड बिग VCs आर बेटिंग ऑन इट, यू ऑटोमेटिकली शुड इन्फर कि इसका फाउंडर भी बड़ा जबरदस्त होगा, और एल्स व्हाई वुड VC इन्वेस्ट. सो यू हैव दिस कॉन्फिडेंस. ना मैं थोड़ी सी और खिचड़ी पकाता हूँ, थोड़ा सा लोगों को और कंफ्यूज करता हूँ. लोग पहले बहुत कंफ्यूज हैं. हाँ, जरा अभी सिंपलीफाई भी करते हैं चीजें. सही. ऑन द अदर हैंड एक और इशू क्रिप्टो में ये शुरू हुआ है कि रेगुलेटर्स डेवलपर्स के पीछे जा रहे हैं कि आप एक दुनिया बना रहे हो जिसमें बैंकिंग डिसेंट्रलाइज्ड है. आप बैंक की छुट्टी कर रहे हो, इंश्योरेंस की छुट्टी कर रहे हो, आप खुद की रिजर्व करेंसी बना रहे हो. OHM अगर आपको पता है, वो उसका एम ये था कि सो देयर आर लॉट ऑफ स्टेबल कॉइन्स जिसके पीछे कोलेट्रल नहीं होता. जैसे लेट्स से यूएस डॉलर है, उसके पीछे US डॉलर नहीं, मगर मैंने इशू कर दी करेंसी, बट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म दैट काइंड ऑफ इंश्योर्स के ये एज अ करेंसी यूज हो. मैं इस पे आता हूँ. तो हो ये रहा है कि गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स आर क्रैकिंग डाउन दीज डेवलपर्स. उनको अरेस्ट करके ले जाते हैं, उस पर लॉ सूट कर देते हैं. एंड दीज डेवलपर्स, सम ऑफ देम हैव वेरी गुड एथॉस. दे वांट टू डू गुड इन द वर्ल्ड. दे वांट टू बेसिकली मेक अमेजिंग ब्लॉकचेन इनोवेशंस. वो क्या करें बेचारे, वो क्या करते हैं, वो अनोनिमस हो जाते हैं. So they basically don't reveal their identity, and they're similar to Satoshi. They don't reveal their identity क्योंकि उनको पता है कि मैंने कर दिया, मुझे पुलिस उठा के ले जाएगी, या मुझे मार देंगे, या मुझे मेरे खिलाफ लॉ सूट कर देंगे, मेरी फैमिली को डैमेज हो जाएगा, या लेट्स से कॉइन क्रैश हो जाता है तो भी इनकी लाइफ को खतरा होता है, फॉर एग्जाम्पल. सो वो इस वजह से अनोनिमस होते हैं. सो ये ऑन द अदर हैंड, सॉरी मेरा लैब्राडोर थोड़ा सा भौंक रहा है. सही. तो उसकी आड़ में बहुत सारे आपके पास रग पुल वाले प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे स्क्विड गेम. उसमें ये था कि लोग खरीद सकते हैं, कॉइन बेच नहीं सकते. इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रग पुल्स आउट देयर. सो वो भी अनोनिमस इसी तरीके से बोल सकते हैं कि हम अनोनिमस हैं, and we launch a project. So hence education is very important, and I feel like just speculating 50% ऊपर गया ये और ऊपर जाएगा, you don't do that. You basically have to be very savvy, and that is one of the reasons why I'm doing a part-time masters. एक साल मेहनत के भी और भी मैं continue करूँगा, even though I don't have time. मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है because in this industry there's so many lucrative investment opportunities कि आपका कभी कभार दिल ये होता है कि मैं पढ़ूँ नहीं, मैं investment में ही focus करूँ. But I think it's very important to learn things. Very important to एक चीज आप ये भी कर सकते हो, आप टोकन मैट्रिक्स में सब्सक्राइब करें. मेरी डीप डाइव्स होती है, मैं एक प्रोजेक्ट को 40 मिनट में डिस्क्राइब करता हूँ A to Z. अगर आपने वो ना देखी हो तो आप वो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करें. तो एक प्रोजेक्ट लेट्स से एवलांच है, मैंने उसकी 40 मिनट इन्वेस्टर से लेके, वैल्यूएशन से लेके, टीम से लेके, इनोवेशन से लेके, क्या मार्केट टारगेट कर रहे हैं, सब मैं डिस्क्राइब करता हूँ. तो आपकी भी अप्रोच ये होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि मेरे दोस्त ने कहा है या मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है. नहीं, आपको रिसर्च करना पड़ता है. और फिर जब आप जितनी रिसर्च करोगे, आप फिर उस कन्विक्शन के साथ कॉइन खरीद सकते हो. कन्विक्शन के साथ कॉइन आप खरीदोगे तो फिर ये है कि वो 50% ऊपर जाए, 50% नीचे जाए, आपको पता है एंड गोल क्या है. चेक इन मोहसिन को 4 दफा पूछ चुके हैं, जरा समझा देते हैं उनको. व्हाट इज वेब 3.0? हाउ सून कुड वी सी वेब 3.0 अराइव? अच्छा, so Web3 is basically Web2, मगर उसमें हमारे जैसे लोग we can take ownership. And another interesting thing about Web3 is let's say मैं Twitter की बात करते हैं. So we met on Twitter, right? But Twitter अपनी partial API देता है. आप Twitter क्योंकि बिजनेस मॉडल है, वो अपना बिजनेस मॉडल बचाना चाहेगा ना, तो वो क्या करता है, वो अपना कोड ओपन सोर्स नहीं रखता, वो अपना फ्रंट एंड बैक एंड का कोड किसी को देता नहीं है. दे कीप इट गेटेड. हर चीज एक ब्लैक बॉक्स एक कंप्यूटर में होगी, वो किसी को उसका एक्सेस नहीं होगा. वो API के जरिए डिफरेंट वेबसाइट ट्विटर से लिंक करेंगी. नाउ थिंक अबाउट अ वर्ल्ड वेयर देयर इज नो सिस्टम एज सच. हर चीज ओपन सोर्स है. तो शहजाद को कल ट्विटर बनाना है खुद का, वो जाता है गिटहब पे, किसी का ट्विटर पड़ा हुआ है, API पड़ी हुई है, मतलब उसके पूरा कोड पड़ा हुआ है, वो उसके ऊपर 5-6 और इनोवेशंस करता है और एक खुद का सोशल मीडिया बनाता है. फिर उसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर आता है, वो बोलता है नहीं मुझे इसमें NFT भी डालना है. फिर एक बंदा आता है, नहीं NFT के अलावा मुझे गेमिंग भी डालनी है. फिर एक बंदा आता है कि मुझे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग भी डालनी है. तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं कंपोजिबिलिटी. हम आपस में एक दूसरे के काम के ऊपर चीजें बना सकते हैं और हम क्रेजी चीजें कर सकते हैं. ये Web2 में नहीं होता, क्योंकि अगर Web2 में फेसबुक अपनी कोड दे दे या Amazon अपना कोड दे दे तो वो तो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, वो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री नहीं होगी. तो फर्स्ट डिस्टिंक्शन फैक्टर ये है कि ये ओपन सोर्स है, हर चीज अवेलेबल है,
अगर आपको खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाना है, यूनिस्वैप का कोड गिटहब पे है, आप कॉपी पेस्ट करो, फोक करो उस कोड को, उसके ऊपर एडिशन चेंजेस करो और आप खुद का प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो। सही है, तो एक ये है। दूसरा चीज ये है कि Web3 इज वेरी डिफरेंट, लाइक इक्विटी एंड टोकन्स आर वेरी डिफरेंट। जो टोकन है वो आपको ये एक इंसेंटिव देता है कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते, मोबाइल से आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, आप उसकी ओनरशिप भी ले सकते हो। फेसबुक कभी भी आपको अपने प्रोडक्ट की ओनरशिप नहीं देगा, क्योंकि वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा वरना। सही है, तो देयर इज दिस फैक्टर दैट नॉट ओनली यू कैन रीड, not only you can use, but you can own stuff. You can own internet. You can own the social and the money layer of internet. तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो जो होगी। Web3 टोटली अपने फॉर्मेशन में कितना आएगा, 5 से 10 साल लगेंगे। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बीच में हमने मेंशन किया था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जी, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोड अवेलेबल है। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में ये कि लेट्स से हम दो आपस में इंडिविजुअल्स हैं, हमें एक चीज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करनी है, तो हम 24/7 चीजें एग्जीक्यूट होंगी, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। हम सो भी रहे होंगे, बैंक चल रही है, हम सो भी रहे, इंश्योरेंस चल रहा है, हम सो भी रहे, चीजें हो रही है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये चीजें ऑटोमेट कर देता है। सो दिस इज अनदर फीचर आप कह सकते हैं Web3 का। जस्ट लाइक क्रिप्टो डजंट स्लीप 24/7, आपका बिजनेस 24/7 चलता रहेगा। मगर बिजनेस में ये है कि जो यूजर यूज कर रहा है, आपको उसको भी इंसेंटिवाइज करना होगा। तो यूजर इज ऑल्सो द ओनर and you have 24/7 access of everything is available on internet। और मजे की बात यह है कि if you make a good product, if you're a builder, आपको कोई रोक नहीं सकता। like there is no concept of monopoly, whilst Amazon and Facebook have a monopoly, वो advertisement के जरिए चीजों के साथ करते हैं। but if you build a good project, there is no concept of monopoly in crypto, you can build on dApps। तो only monopoly I would say is layer ones, जो इथीरियम है, सोलाना है, इवेंचुअली उनकी मोनोपोली होंगी, क्योंकि इसके ऊपर सारी आपकी एप्लीकेशंस बनेंगी, क्योंकि ये आपको लेयर सिक्योरिटी देता है, डिसेंट्रलाइजेशन देता है। सो यू डोंट हैव टू वरी कि मेरा कोड या मुझे किसी ने बेसिकली ट्रांजैक्शन फॉल्स थी या वेरीफाई नहीं हो सकती एक्सेट्रा। आप अपनी सिक्योरिटी बेसिकली आउटसोर्स कर देते हो और बाकी आप जो भी चीज करना चाहो आप कर सकते हो। हमारे रेजिडेंट हरकी हैं चैट में, मार्स मैन, वो गिट हब पे बहुत हंस रहे हैं। मुझे लगता है जब ये इंटरनेट पे हब सुनते हैं तो उनको एक ही वेबसाइट याद आती है, बट चैट में वॉरियर पूछे, चेक इंडिपेंडेंट उर्दू वेयर पीपल लॉस्ट बिलियंस ऑफ रुपीज, क्रिप्टो इज फ्रॉड, डोंट पुट योर सेविंग्स इन दिस। मैंने इनको कहा क्रिप्टो फ्रॉड नहीं है, लोग क्रिप्टो में फ्रॉड करते हैं। बट आपने भी शायद न्यूज देखी हो, पाकिस्तान में किसी ने बाइनेंस पर लोगों के साथ बिलियंस का फ्रॉड कर दिया। ए, हैव यू सीन द न्यूज? बी, what would you say to people who look at news like this and think all of crypto is a fraud? Are all Pakistani terrorists? Yes. हाँ, तो बेसिकली यही है, देयर बैड एक्टर्स एवरीवेयर। प्लस अभी बड़ी नेसेंट है, ये वाइल्ड वेस्ट है, लिटरली एक वाइल्ड वेस्ट है। चीज़ें डेवलप हो रही हैं, आस्ते आस्ते टाइम के साथ पता चलेगा। और आई डोंट थिंक इट्स टोटल फ्रॉड। क्रैशेस होंगे, you can lose 60-70% of your money, but at the end of the day, just think about this, ke the things I'm describing, the innovations I'm describing, it's unparalleled. Like you won't have Facebook, like Facebook जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट को, अपने कोड को प्रोटेक्ट करता है, you won't have that. So let's say tomorrow if I am a good developer, I can launch my own Facebook, who can stop me? So these innovations I don't think should be thought of as fraud. ये है कि आप स्पेकुलेट करते हैं, पैसे आप चले गए, स्पेकुलेट भी ध्यान से करें ना। चाची के बेटे ने कहा ये 150 गुना ऊपर चले जाएगा, आपने खरीद लिया, वो तो नीचे आ गया। सो दैट्स, आपने 5 मिनट भी मेहनत नहीं की, वेबसाइट तक नहीं गए उस प्रोजेक्ट की कि भाई कर क्या रहे हैं, एंड यू बेसिकली लाइक मैं पैसा डालूंगा अमीर हो जाऊंगा, फिर पैसे चले जाते हैं। पीपल आर लाइक फ्रॉड, दैट्स नॉट फ्रॉड। आई थिंक actually people who do that, they are defrauding themselves because they're lazy and they don't do the due diligence. Now unfortunate है जो Binance में हुआ था, I think उसमें थोड़ी Binance की भी गलती है, थोड़ी लोगों की, थोड़ी partially लोगों की भी गलती है। They should have YouTube, they should have done their own due diligence कि ये vendors credible हैं या नहीं है। और Binance की भी है कि how are they linked with Binance? I'm not as aware about this topic. मैंने सिर्फ partially सिर्फ news headline पढ़ी है, I'm not aware of it, but just classifying because of this crypto fraud, I think it's unfair. मेरे खुद के भी हजारों डॉलर्स रग पुल में गए,
but it's my fault. Like I knew the risk and I took it. So if I wake up tomorrow and say मेरे $1,000 चले गए, ये तो industry बेकार है, I think I'll be lying to myself. स्टॉक में भी लोगों के साथ ये होता है, लिटरली लोगों की इस तरह की कहानियां हैं कि जी मेरी गली के कोने पे उसने बोला कि मुझे आप दे दें 10 लाख, मैं क्रिप्टो में डालूंगा, वो गायब हो गया। क्रिप्टो फ्रॉड भाई, क्रिप्टो फ्रॉड नहीं है, वो जो कोने पे तुम्हारा बैठा हुआ था जिसको तुमने उठा के 10 लाख दे दिए ऑन योर बिहाफ। नेवर पे एनीबडी। आई मीन इट्स क्वाइट अ सिंपल रूल, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान में नॉलेज थोड़ी कम है। बट लोगों को पैसे देते हैं कि आप क्रिप्टो में लगा दें, फिर वो जाहिर बात है इधर उधर भाग जाते हैं। प्रॉपर्टी में इतना फ्रॉड होता है, डज दैट मीन ऑल प्रॉपर्टी इज फ्रॉड पाकिस्तान? uh, how much should we invest in a crypto to get started? Personally, I think that depends on how much disposable sacrificial money you have, but I'm wondering about the average standards. Very difficult question. I don't know you. I don't know how much you can lose. But let's say anonymous student नाम है, तो जिस तरह तन्मय कहते हैं कि इनका तो शायद कैंटीन पे किराया हो। Let's say आपने 1 लाख रुपए की सेविंग की है, and let's say आप 30,000 अगर आपके कल चले गए and you can still sleep well at night, I think that's the amount you should invest. And you should start with Bitcoin, Ethereum, थोड़ा सा 50% and 50% other layer ones. I'm just going to mention layer ones, not financial advice. Layer ones में Solana आ गया, not Cardano, Solana, Polkadot, Cosmos, Near Network. आप कहीं भी गूगल कर लें layer ones, आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप रिसर्च करें, आपको जो प्रोजेक्ट पसंद आता है 3-4 वहां से पकड़ें, बिटकॉइन डाल दें, थोड़ा इथेरियम डाल दें, लेके सो जाएं, भूल जाएं। डोंट लुक एट इट एवरी सिंगल डे। यस। अच्छा, एक और चीज, लोग क्या करते हैं कि क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल है, एक दफा इन्वेस्ट कर लिया एंड दे बेसिकली फॉरगेट अबाउट इट। सो आई थिंक यू शुड बी लाइक दिस। लेट्स से आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं, एवरी मंथ लेट्स से टेक 500,000 आउट एंड इन्वेस्ट। डिस्काउंट कॉस्ट एवरेज इज द नेम ऑफ द गेम। हर महीने थोड़ा थोड़ा आप डालें, मार्केट ऊपर हो नीचे हो, ऊपर हो नीचे हो, ऊपर हो नीचे हो, आप थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं। यू नॉट केयरिंग अबाउट मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, आपने मार्केट को एवरेज आउट कर दिया। और जो प्रॉपर इनोवेशन हो रही है, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो आपका उस एवरेज को ही 5-10 गुना कर देंगे। नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, मगर 5-10 गुना आस्ते आस्ते ले जाएंगे, क्योंकि आप फ्यूचर की इनोवेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो पीपल व्हाट दे डू इज, मैंने 1 लाख सारे पैसे थे एक ही साथ डाल दिए एंड नेवर इन्वेस्ट अगेन। और वो 1 लाख मैंने टॉप पे खरीदा, बॉटम पे आ गया एंड आई एम क्राइंग कि भाई मेरा तो नुकसान हो गया। फॉल्ट इज योर्स। 1 लाख के आप भले 10,000 डाल रहे हैं एक मंथ में, फिर दूसरे मंथ में, फिर दूसरे मंथ में, जस्ट स्प्रेड इट आउट। देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन इन्वेस्टिंग कॉल्ड डिस्काउंट कॉस्ट एवरेज। गूगल करो and see how that works. And I think it's one of the most beautiful thing. अगर आप ये करते हो, आप फिर चीजों को कंपाउंड कर सकते हो over the period of time. So ये जो एक आइडिया है कि there will be one winner, is there any truth to that कि यार everybody is vying to be that one? जिस तरह Facebook भी है, MySpace भी था, Orchid भी था, but then Facebook became sort of the hub. So in cryptocurrency, some people also argue कि एक winner होगा, वो कौन सा होगा ये तो किसी को भी नहीं पता. But the rest of these currencies which look great or fancy right now, they might also just fade away. A lot of the currency, I'll say 70 to 80% of projects will fade away, die out. That's the nature of startups, right? Abhi crypto is kind of in a startup phase. आप basically जो shares crypto के tokens खरीद रहे हो, आप token खरीद रहे हो in majority of the case, apart from those coin which are in top 100 market cap, जो टॉप 100 है, आप कॉइन गेको में जाओगे, जो टॉप 100 है, उसके अलावा आप जो भी क्रिप्टो खरीद रहे हो, यू बेसिकली इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप सक्सेस भी हो सकता है, ठप भी हो सकता है. सो 80%, 70 to 80% of projects will go to zero or will basically die out. Those who will do something unique or add value will stand out. Now आपने मुझे कहा हम बेसिकली हिस्टोरिकली देखते हैं, आपके पास मैक ओएस है, विंडो ओएस है, कंप्यूटर में you have two winners. There's a kind of like a duopoly. मोबाइल में आप देखते हो एंड्रॉइड, iOS. सोशल मीडिया में आप देखते हो थोड़े से और हैं, लाइक फेसबुक के अलावा टिकटॉक भी है, स्नैपचैट भी है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और ये सारी चीजें भी हैं, मगर वो भी अब फेसबुक ने खरीद ली. सो यू हैव लाइक काइंड ऑफ लाइक ओलिगोपोली. आई थिंक क्रिप्टो में थोड़ा सा बहुत मुश्किल है अभी डिटरमिन करना है. दीज आर द क्वेश्चंस दैट कीप मी अप एट नाइट. अगर मैंने डिटरमिन कर लिया let's say there is going to be a winner take all market, then I'm going to become very rich. At the moment, what you're seeing in the market, I think for next 2-3 years, ye market question to answer degi. At the moment, you are seeing multi-chain world where you have Avalanche, where you have Solana, where you have Cosmos, and what I've started to think is कि उनका खुद का इतना खतरनाक किस्म का ट्राइबलिज्म है.
हर बंदा उस इकोसिस्टम की बारे में बात करता है and just ignores everything else. So I've started to think of them as individual economies. Pakistan hai, India hai, Singapore hai, USA. I think that's the way forward. You might have something like China and US that will be like dominant forces of the world, but you'll also have good other countries as Switzerland, as Singapore, that does their own business and makes money, and people are happy there. Community members are happy there. So I envision crypto make, I think the structure will be like more like global economy. And the reason I say that is because आप layer 1 की बात करते हैं, they provide you the security. So what does country do? What does Pakistan do? Pakistan at the end of the day, at a very fundamental level, gives us फौज जो हमें हमारे borders को secure करती है, and government that runs it. So in crypto you have layer 1s that gives you security, and Pakistan is a bad example. Yeah, Pakistan is a bad Government example. कौन रन करता है और बॉर्डर कौन संभालता है, वो कभी-कभी मिक्स हो जाते हैं ना हमारे तो. So let's give an example of America. So you basically American government gives you security. अगर आपके पास पैसे नहीं है, they'll help you, and you have army that secures your border. So all the layer 1s. अगर आपके सर के ऊपर से बात जा रही है, just Google what layer 1s are. I think it will be good education for you. आप YouTube पे भी जाके देख सकते हो layer 1 क्या है. So उसके ऊपर I think उसके ऊपर different innovations होगी. जैसे US में Microsoft बना, Facebook बना, but it happened inside that economy. So I think this is what you'll see going forward. But then there will be some projects that will be so disruptive कि सिर्फ वो एक जगह पे अपने आप को नहीं रखेंगे. They'll be like, जैसे Facebook है. I started in America, but let's just go throughout the world. वो प्रोजेक्ट हर ब्लॉकचेन में जाके अपने आप को फिट करेगा, and their community will flourish everywhere. Now, another thing I say to people is, at the moment, especially, since we don't have a winner, just be very nimble. Just be like a macro investor. क्योंकि अभी हर बंदा अपने बैक को पंप करता है, हर इकोसिस्टम, जैसे इथेरियम की खुद की डेवलपर कम्युनिटी है और इन्वेस्टर्स हैं, उसी की तारीफ करते हैं. कार्डानो उसके बैक होल्डर्स हैं, वो उसकी तारीफ करते हैं. सेवी इन्वेस्टर सबकी बातें ऑब्जर्व करता है और देखता है कि भाई कहाँ अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन देयर ओन बैग, ऑन देयर ओन इकोनॉमी, बट देयर समटाइम्स कैन बी क्रॉस चेन arbitrage या क्रॉस चेन इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी जिसका फायदा उठा सकते हैं, बिकॉज लेट्स से वन चेन इज मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग. सो जस्ट बी वेरी निम्बल इन योर थिंकिंग. आई थिंक दैट्स द वन एडवाइस I'll give you, and just prepare to have a drawdown of 50 to 80% of your portfolio and still be okay with it and still like sleep happily. Those are the two advice I'll give to people who basically are starting to learn about crypto and start investing in crypto. ये कार्डानो पे आपकी हंसी क्यों आई थी? आजकल तो कार्डानो थोड़ा सा मरमर के ऊपर जा रहा है. जैसे हमने पहले VC की बात की थी, there is no VC backing Cardano. Cardano is a very funny one. Like they have the amazing, like उसके आप GitHub पे जाओगे, they have the best comments, but then उसका जो leader है, he's like a shiller. वो Cardano को सिर्फ shill करता है. उसकी community बहुत strong है, but there's no project on Cardano. So Ethereum में you have 400-500 different projects built. पूरा banking system, पूरा NFT ecosystem build हो गया है. हम NFT की भी बात करेंगे. I think NFTs are very amazing. 22nd को कुछ Sunday swap नहीं launch हो रहा? Isn't that launching on Cardano? हाँ, उनका एक exchange launch हो रहा है. I haven't done deep dive on Sunday launch. मगर सिर्फ एक project, आप दूसरे इकोसिस्टम में जाएं, हजारों प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए हैं, and basically it's flourishing. Now the reason I'm bashing Cardano is because वो top 5 top 6 coins में हैं, and they have very little to show. So that's why it annoys me कि भाई there's nothing going on, everybody's buying the hype, everybody's buying the future. Whilst मैंने कुछ investments की भी हैं, like for example near ecosystem, not financial advice, near ecosystem, they're delivering. वो Google के लोग हैं, पूरी जिंदगी sharding पड़ी है, वो sharding implement कर रहे हैं, hundreds of amazing projects being built. बेचारा 25 पे 20 पे market cap पे है, whilst Cardano उनका ये लीडर आता है, कुर्सी पे बैठता है, हर संडे सैटरडे को लाइव स्ट्रीम होती है, अफ्रीका के बच्चों की बातें करते हैं, एक प्रोजेक्ट नहीं बना. So for me that gives me like
yeah, मतलब that सिर्फ kind of makes फाइनेंशियल me. एडवाइस आप लोग ना ही लें, लेकिन नियर प्रोटोकॉल इज वेरी गुड. मैंने भी अभी कोविड में बहुत शॉर्टिंग सीखी. कोविड के दौरान मुझे ये चीजें सीखनी पड़ी. अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, आप जब इंडिया की बात कर रहे थे, आई एम एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज. आई वाज होपिंग पाकिस्तान में थोड़ी बहुत इनोवेशन आए. बट इफ यू वर टू स्पेक्यूलेट, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग ये तो बिल्कुल स्पेक्यूलेशन ही होगी, क्यों नहीं आ रही? इज इट बिकॉज इंडिया में जो आईआईटी वगैरह हैं, उन्होंने भले आर्केक आइडिया से फोकस किया हो कि बेटे को इंजीनियर बनाना है, बेटे को डॉक्टर बनाना है, बट अब ये बड़ा फायदा हो गया उनका कि जो सारे इंजीनियर बनाए हैं, अगली दुनिया तो ये इंजीनियर ही बना रहे हैं. इज इट बिकॉज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस कम है, या हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इनोवेशन नहीं पढ़ाते, या टीचर्स को खुद भी नहीं पता होगा ब्लॉकचेन क्या है तो वो आगे क्या पढ़ाएंगे? व्हाई आर वी नॉट सीइंग ब्लॉकचेन इनोवेशन फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स? आई थिंक लीडर्स नहीं है. आई थिंक हमारे एक प्रोजेक्ट है स्टैक्स, मुनीब का. आई थिंक ही इज ब्रिलियंट, ही इज वेरी स्मार्ट. उसने यूएस में जाके एंटिटी खोली, थोड़ा सा लम्स वालों को फंडिंग करता है, बट ही इज नॉट टेकिंग लाइक as big of a leadership role as, let's say, India का एक प्रोजेक्ट था संदीप का मैटिक, called Polygon Matic. Now that person is basically, he's investing in entrepreneurs in India. उनको बैकिंग कर रहे हैं, उनको 5-5 4-4 मिलियन दे रहे हैं कि लो बनाओ, just an idea, just बनाओ. So I think that's also partially to blame कि हमारे जो कुछ developers हैं, they're not funding that. Secondly, I think this should be a strong message for a lot of VCs involved in Pakistan. आप grocery की apps बना रहे हो, why not crypto? Crypto is like globalized. आपको profit होगा. So our VCs are also not focused on crypto. Fintech करते हैं. I think the biggest disruption that is happening in fintech is DeFi. So our VC landscape is also not investing in that. Plus India में जो VC है, वहाँ पे Sequoia, Multicoin, बहुत खतरनाक किस्म के well-backed VCs हैं. And plus, I think the education and people's interest. I think अगर आपको government support नहीं करी, आपको school support नहीं करी, you can still go online, learn Solidity, and just take the onus to build. And trust me, अगर आपके पास एक अच्छा idea है and you can like show something, you can raise $4-5 million in crypto like this. जो यहाँ पे VCs के लिए आप 10 साल बिजनेस बना रहे हो, 6-7 साल बिजनेस में कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बेसिकली अब वहां उस हद तक पहुंच जाते हो जहां तक आपको प्रॉफिट मिल रहा है, एंड देन यू गो टू अ वीसी इन पाकिस्तान व्हिच गिव्स यू लेट्स से $200,000-300,000 और आपका 30% 20% इक्विटी ले लेते हो. मैसेज फॉर यू इज learn Solidity, learn smart contract, and basically become a builder in crypto. I assure you, this is such a meritocratic world, और VCs के पास इतने पैसे हैं. If you just have an idea, a white paper, and couple of a website which kind of shows कि आप किस तरह उसको implement कर रहे हो, you'll be able to raise from 500 million to 1 billion. आप कुछ बहुत अच्छा खासा पैसा रेज कर सकते हो. So that's the message. और इंडिया में जो मैटिक है, आई थिंक दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब. टॉप 20 मार्केट कैप वाला कॉइन है, एंड उसकी जो ट्रेजरी है, जो कॉइन जो पैसा कमा रहा है, उसकी जो फीस जमा हो रही है, दे आर डिप्लॉइंग इट इन इंडिया बाय हेल्पिंग द एंटरप्रेन्योर्स देयर. सो व्हिच इज अमेजिंग. हमारे यहाँ पे ये नहीं है. आई फील लाइक स्टैक्स एक है मुनीब की. आई होप दे काइंड ऑफ फंड प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, ट्रेन देम, मेंटोर देम. आई होपफुली ये थोड़ा सा हमें देखने को मिले फ्यूचर में. ये बहुत जनरलाइजेशन होगी, बट आई हैव नोटिस्ड, पर्सनल ऑब्जर्वेशन ही है कि इंडियंस डू हेल्प अदर इंडियंस. इंडियन किसी कंपनी में भी लग जाए तो वो और इंडियंस की सीवीज फॉरवर्ड करता है, कोशिश करता है. पाकिस्तानी कहीं पहुंच जाए तो वो फिर बोलता है मैं ही वाहिद इंसान हूँ जो पाकिस्तान से बाहर आके ये कर सकता है. वो किसी और पाकिस्तानी को आगे आने देता ही नहीं है. इनफैक्ट उसकी हट जाती है अगर कोई दूसरा पाकिस्तानी भी आ जाए वहां पर. Some truth to it. मेरे जो करियर में there are obviously some nice people who have done that, but मेरे करियर में in terms of networking, Indians have helped me more than Pakistanis. This is a big statement. Like they have helped me forward the CV, helped me in the interview process more than, let's say, some of the Pakistani people. मैं आपको इतना बुरा, like मैंने COVID के दौरान, like I was looking for a venture job in Pakistan. I'll name some people over here. I don't care. Let's say Lexan का उस वक्त venture arm था. I was like, मैंने अभी global macro research छोड़ी है. I just want to learn about VC. I'll basically work for free. Here's my CV. आफ्ताब साहब थे Lexan में, और भी 1-2 लोग थे. Nobody cared. I have a degree, masters. I have few years of work experience, and I just wanted to learn about VC. तो बेसिकली लिंक्डइन में कोई किसी
कोई जवाब नहीं देता, कोई नहीं करता. But let's say if you do it with some other people, they do help. I think I'll just give one shout out to one person. I think the Soy Venture के एक साहब थे. He basically had a conversation with me. He kind of told me कि इस तरह से आप steps लो, and he even kind of told me कि मैं, बल्कि he was like, I'll give you money, you do work for me. So that was amazing. Shout out to him. मगर उस वक्त फिर मुझे जॉब मिल गई, so I had to decline him. But that's the truth कि यहाँ पे LinkedIn पे भी लोग एक दूसरे को हेल्प नहीं करते. पार्शली मे बी हमारी इंडस्ट्री छोटी है, हमारे पास खुद पैसे नहीं है हम हायर करें, और मे बी इट्स जस्ट वी आर नॉट, इट्स बाबूज. मैं अगर अपनी इंडस्ट्री में बात करूं, मीडिया जो है एक्टिवली हमारे जो चैनल्स हैं वो प्लेटफॉर्म्स को बैन करवा रहे हैं. गवर्नमेंट नहीं कर रही. मॉडेस्टी और ये ऑब्ससीनिटी सारे झूठ हैं. हमारी जो पुरानी कंपनियां हैं जो घटिया ड्रामे रोज रात बनाते हैं, वो जिस तरह बनते हैं सबको ही पता है. एक दिन में पूरे पूरे एपिसोड शूट हो जाते हैं. They want all those advertisement money. They want everything that comes with it, and they don't want innovation. They don't want platforms to launch here. They don't want Z5 or Netflix or Amazon to come here because उनकी monopoly उस तरह से उन चीजों से challenge होती है. तो उसी तरह है कि जो भी चीज आगे जा रही है, जो बैन भी है, वो यही है. It's out of fear and insecurity. It's not to protect the average Pakistani as they're claiming. हमारे रिजर्व्स, लाइक जैसे स्टेट बैंक के रिजर्व्स कम है, हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज रहती है बिकॉज वी हैवंट फिक्स्ड आवर इकोनॉमी स्ट्रक्चरली. मैंने 1.5 साल ग्लोबल मैक्रो में भी काम किया है. सो वी हैव अ फंडामेंटल इशू ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट जो परसिस्टेंट है. एंड आई थिंक हमारी स्टेट बैंक ने ये रियलाइज कर दिया विद क्रिप्टो बर्जनिंग. इफ वी डोंट टेक एनी स्टेप्स, a lot of wealthy Pakistani will just take their money out, especially or speculate, especially when थोड़ा सा dollar की shortage हो जाएगी, they'll start converting rupees into dollars, and that kind of threatens them. So rather than fixing, basically आप कैंसर के पेशेंट को कीमोथेरेपी दो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, and fix him. What we do is we give them painkillers, short-term painkillers, just to चलाओ काम चलाओ, 1-2 साल और जिंदा रह लेंगे. पेन किलर भी नहीं देते हम तो बोलते हैं अच्छा तुझे कैंसर है, तू 1 घंटे तो नौकरी कर सकता है, उसको नौकरी पे भेज देते हैं. सो इवन ऑल द रीसेंट टैक्सेशन दैट यू सी ऑन बेसिक्स, ऑन नेसेसिटीज, ये जो हेवी टैक्सेशन कर रहे हैं, वाइल रियल एस्टेट में आप एमनेस्टी दे रहे हैं, जो इंडस्ट्री कुछ नहीं करती. बस अमीर लोगों ने अपने ब्लैक मनी वाइट करना है, वहां पे आप एमनेस्टी देते जा रहे हैं. और जो बेसिक गुड्स हैं, जो बेचारे टैक्स दे रहे हैं या पेट्रोल या बिजली दे रहे हैं, they are just suffering even more. So आप जो गालियां देते हैं पाकिस्तान में, लोग टैक्स नहीं लेते, बिजली चोरी करते हैं, you literally the government's forcing them to do that. Not that I'm endorsing no, I'm not just going to blame government, I'm also going to blame our people as well. हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, they find ways to टैक्स बचा लिया, बैंक अकाउंट नहीं खोला. Yeah, so it's like a vicious circle. Like लोग basically they are like, government हमारी मदद नहीं करती. Let's say even if government wants to help you, they'll be like, tax nahi, hum kahan se help kare. So there's this vicious circle. So I think as a nation we need to like, Mehdi, as a nation we need to step up. It's about resources, right? कि एक आदमी जिसने कुंडा लगाया हुआ है और 15,000 की बिजली चुराते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी नहीं डूब रही. नहीं, वो जो आदमी लाखों करोड़ों रियल एस्टेट में ब्लैक मनी लगा रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफिशियली एमनेस्टी दे रही है कि आपका ब्लैक मनी हम वाइट कर देंगे, जिसकी वजह से मेरे जैसे लोग एक घर नहीं ले सकते. आई मीन इंसैनिटी है, राइट? अगर आपको डिफेंस में एक अपार्टमेंट चाहिए, एज पर आवर अर्निंग्स, एज पर आवर औकात, वो 3 बेडरूम का अपार्टमेंट 2.5 करोड़ का नहीं होना चाहिए. बट वो क्यों है? क्योंकि सब लोगों का काला पैसा वहां पे आया हुआ है, जिसको गवर्नमेंट वाइट करती है. Those big fishes, that's why मसले मसाइल हैं. नॉट के यार ये कैश इकोनॉमी चल रही है या रसीदें नहीं देता वो आदमी अगर रसीदें ना भी दे, दुकान वाला, कल को जाके वो उन पैसों का क्या करेगा? वो शैम्पू खरीदेगा, वो सेलफोन खरीदेगा, उन सब चीजों पे टैक्स देगा ही ना. At the end of the day, that money is going back into the economy. But all these oligarchs and rich elite who control everything and then take their money abroad and open Papa John's, those are the real problem. थोड़ा फंडामेंटल इशू एजुकेशन का भी है. सो लेट्स जस्ट डिकोड दिस. व्हाई इज सारा पैसा रियल एस्टेट में क्यों जा रहा है? लाइक से इवन फ्रॉम पीपल हु आर वेरी रिच, व्हाई आर दे जस्ट पुशिंग ऑल द मनी इन रियल एस्टेट? एमनेस्टी मिलती है, दैट्स गुड, बट आई थिंक बिकॉज देयर आर नॉट अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. लेट्स से क्रिप्टो में हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, स्टॉक्स को हम स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, वीसी हमारा पाकिस्तान में छोटा सा है. एंड okay, you have government to blame, but then you can also kind of seriously
kind of blame कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि talent की भी shortage है, like human capital की भी है. It's good to kind of feel better by saying that, you know what, हम पाकिस्तानी हैं, हम जुगारू हैं, हम बहुत होशियार हैं. But I think a lot of the people, a lot of the people have to kind of sometimes think internally कि हम as a nation क्या step ले सकते हैं. Even for the very poor, we need to have a system design कि उसको हम middle class में education के जरिए लाएं. It saddens me कि let's say Fiverr पे Upwork में इंडिया में गांव पे लोग बैठ के भी काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे अभी भी वो कर रहे हैं. So government is to blame, but I think our private sector and some of the people who can kind of uplift this social wise, I think we should do something about that. I don't know how we're going to do it. It's very complex. Should they? Yes, but मैं private sector को तो नहीं टैक्स देता ना. अब you mentioned Fiverr. क्या लोग कमाते हैं पाकिस्तान में यार? $100 कमा लेते होंगे महीने का. अभी गवर्नमेंट की रिसेंटली वो आई थी कि जी हम टैक्स करेंगे इसको. Shouldn't you be happy कि ये गाँव लोग में लोग बैठकर अगर $50-100 कमा रहे हैं, वो आपकी इकोनॉमी में आ रहा है? Shouldn't you be happy? Shouldn't you encourage? Shouldn't PTV पे रात को 9 से 10 लोगों को सिखाना चाहिए कि यार ये ग्राफिक डिजाइन का कोर्स है. ये गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल है. मुफ्त के सारे कोर्सेज बनाएं, यूट्यूब पे डालें, लोगों को बताएं फाइवर से आप इस तरह ये चीज कमा सकते हैं. गेट मोर पीपल वर्किंग इन फाइवर. नहीं जी, इंस्टेड आप यू वांट अ टैक्स दैट लिटिल $50-60. वो क्या करेंगे? इट्स नॉट लाइक ही विल स्टार्ट पेइंग टैक्स. They will start finding ways to get that money into Pakistan through other means. आपके जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना पाकिस्तान में, उनके चैनल्स इंडिया में रजिस्टर्ड है. इसी वजह से. हाँ, टैक्स की वजह से. हाँ, सो वो ये नहीं है कि आप टैक्स लगा देंगे 20% 30% तो वो टैक्स देना शुरू हो जाएंगे. नो, they'll just find other ways to get that money. So rather than encouraging certain things like Fiverr, इतनी बेसिक चीज है. गवर्नमेंट के आपके रोज लेक्चर्स आने चाहिए किस तरह बच्चे को फाइवर पे लगाओ. बट नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. या और भी बहुत सारी चीजें जैसे मैं लेट्स से इफ आई एम अर्निंग अब्रॉड, इफ आई वांट टू ब्रिंग माय डॉलर्स हियर, आई कांट, आई हैव टू कन्वर्ट इनटू रुपीस. सो पीपल विल बी लाइक यू, मैं रुपीस में कन्वर्ट करूं, रुपीस तो हर साल 10% डिप्रिशिएट होता है. फक इट, आई विल जस्ट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स सेल्फ एक विशियस सर्कल बना हुआ है. I see your point as well, but let's say government अभी टैक्स ना लगाए, हमारे पास करंट अकाउंट में इतने गंदे डेफिसिट पड़े हुए हैं कि उनके पास है ही नहीं. like how like we are actually in brink of bankruptcy. 6-7 महीने का import reserve रहता है, ज्यादा नहीं रहता. So there's a lot of issues, messy entangled issue, structure level पे भी, government level पे भी. Yeah, it's pretty messy. Again, hopefully कौन लोग टैक्स नहीं दे रहे. इज दैट सेम क्लाइमेट वाली आर्गुमेंट कि आप और मैं अगर प्लास्टिक स्ट्रॉज ना यूज करें, कैन वी रिवर्स क्लाइमेट चेंज? नो, नॉट रियली, क्योंकि जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो सबसे ज्यादा गंद और पोल्यूशन करती हैं. It's just putting it as individual responsibility. Should every individual do their best? 100%. बट मैं अगर प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह पेपर स्ट्रॉ यूज करूंगा तो एनवायरनमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बड़ी कंपनियां जो हैं उन्होंने ये करना है. डू यू बाय एनी चांस फॉलो बालाजी एस? या वो क्रिप्टो वाले. हाँ, उनके काफी अच्छे आइडियाज हैं अबाउट. आई थिंक व्हाट ही सेज इज very smart guy. जो कहते हैं विन विन विन. This is where crypto comes in as well. Yes. But that's what I'm saying. Once again, the government of Pakistan has been presented with a chance कि ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोट आपसे मिस हो गई, प्रिंटिंग प्रेस आपसे मिस हो गई. अब ये ट्रेन नजर आ रही है जिसमें आपको you don't need that years of investment, you don't need those companies and factories. ये फास्ट मूविंग ट्रेन है, अब इस पे चढ़ जाओ, आगे निकल जाओगे. एंड नाउ वी लाइक नहीं हमने नहीं करना. सो ही टॉक्स अबाउट दिस. मैंने एक बात कही थी, मनी इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. देयर इज नो सच थिंग एज मनी. हवा में होती है. And with crypto, you have these Ponzi games where you can create monies out of thin air. So this is one thing which I think if somebody from a regulation side is listening, जो बालाजी भी बोलते हैं, जो इनइक्वालिटी को आप खत्म कर सकते हो वो इस तरीके से खत्म कर सकते हो. Let's say you have US dollar and you have PKR, but non-competing currencies, let's say some of the DeFi currencies or NFT based tokens जो हैं वो पार, you can leverage those and create like artificial currency out of the system and kind of reduce that wealth inequality. So that's one of the movements जो decentralization की start हुई थी, वो यही थी. like a lot of people can say at the moment VCs का ज़्यादा है, मगर a lot of people who are not that rich, I'm not going to name some, but मैं पाकिस्तान से भी लोगों को जानता हूँ who basically invested $5,000-6,000 and have made millions. Not by speculating, by actively researching, by actively taking participation in different Discord community, or
और फ्री में चीजें मिलती है, फ्री में एयरड्रॉप्स मिलते हैं, बिकॉज दे कंट्रीब्यूटिंग टू दिस क्रिप्टो इकोसिस्टम. एंड व्हेन अ प्रोजेक्ट लॉन्चेस, दिल बी लाइक, यू वर वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स, आप हमारे डिस्कॉर्ड पे हमें हेल्प करते थे, here is your free drop. So there's a very interesting primitive to crypto as well. I think it's coming at a time when there has been one of the highest rate of inequality globally. So I think one of the ways you can think about how crypto can help is kind of reduce it. In a sense, a lot of people who take interest can make a bit of money. Obviously, VCs will get rich, but now interesting thing is, ये VC भी brand new है. These are not traditionally well-established VC because they don't understand crypto. They only understand traditional sector. But it's simple, right? कि मैंने कोने पे देखा बट कढ़ाई चल रही है, मैं उसके साथ दूसरी बट कढ़ाई खोल दूंगा. Your maybe traditional idea would be कि अच्छा यार 2 बट कढ़ाइयाँ खुल गई तो अब लोग यहाँ जाना छोड़ देंगे. बट एक्चुअली जब 10 बट कढ़ाइयाँ खुलती हैं तो वो 10 के 10 का फायदा होता है, क्योंकि सब बोलते हैं अरे लक्ष्मी चौक चलो वहां की कढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और वहां फिर चाय वाला भी खुल जाता है, फिर चाय वाला भी खुल जाता है, फिर मालिश वाला भी आ जाता है. So it creates an entire market. Now if I'm in India, I look at Polygon Matic and I'm like यार ये तो मतलब छा गया है. सारे इंडियंस पॉलीगॉन में बिल्ड कर रहे हैं. दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इथेरियम में कोई नहीं बना रहा, पॉलीगॉन में बना रहे हैं. Because there was this one guy who did something amazing, and he's funding all the entrepreneurs to build on his ecosystem. Not only those entrepreneurs are getting help, technical help, but he's also getting a help because Polygon, Ethereum jaisa ban raha hai. So it's amazing how what network effects can do. So that's exactly what we need to do. कि अगर हम कुछ करके दिखाएं, उल्टा हम तो जो साथ कर भी रहे हैं. I mean, I hate Waqar Zaka. I find his opinions horrendous. In fact, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जरा मैं वीडियो भी दिखाता हूँ आपको, कि ठीक है यार उसने कोशिश की. I think he hates Binance because उसको खुद का exchange खोलना था, and I think he shouldn't be the face of Pakistani crypto scene because he's more of a speculator rather than somebody who understands it. भाई उसने अपने पर्सनल फायदे के लिए किया, सब कुछ किया. आई एग्री विद ऑल ऑफ दैट, बट फिर भी चलो क्रिप्टो बिजनेस पाकिस्तान में उसकी आ गई उसकी वजह से. कैन यू हियर हिम? तो अच्छा नहीं होगा. इमरान खान साहब, आप कैन यू हियर हिम? आई एम नॉट पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करने थोड़ी आवाज तेज कर दें. लेट्स रिप्ले. बोलने पे आपने मेरे अगेंस्ट जो भी कार्रवाई की है, बहुत ही अजीब हरकत की है इमरान खान साहब आपने. और मैं बता रहा हूँ, अगर मेरी अम्मी, अब्बू और बहन किसी के ऊपर भी आप आए तो अच्छा नहीं होगा. इमरान खान साहब, आपकी मेरी जंग है पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करने की. रजा बाकिर के बोलने पे आपने मेरे अगेंस्ट जो भी कार्रवाई की है, आई एम श्योर किसी पार्टी से आकर आंखें लाल हैं रात के 6 और बजे. आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चीजें मेरे और अपने दरमियान रखें. अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ, इमरान खान जिम्मेदार होगा. मुझे कुछ भी हुआ, इमरान खान. और क्यों? क्योंकि मुझे 10 जनवरी को ये बोला गया कि वकार ज़का जब केस चले कोर्ट में तो आपने बैकआउट करना है इससे और कहना है क्रिप्टो बैन होने दो. मैंने कहा मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि मिडिल क्लास को, गरीबों को अमीर होने का एक मौका मिल रहा है और वह इमरान खान छीनना चाहता है. इमरान खान चाहता है ईगोइस्टिक खान कि मैं सबको ज़कात सदके पे रखूं, चैरिटी पे रखूं, कोई मेरे आगे ना आए. ये एलीट क्लास लोगों का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है. मैं अभी आपको बता रहा हूं. खैर अब ये बातें करता रहता है. आई डोंट लाइक द गाय, बट आई मीन harassing him, इन लोगों ने, he's right, going after him for this is stupid, right? Yeah, I don't know, मतलब okay, so I don't know, let's not get into the political element, kitna sacha hai kitna jhutha hai, let's not get that. I think what he's saying right about one thing is that you are kind of taking away opportunity from these middle class people who by working hard, like it's not an easy job. So recently I also had a breakup, and one of the reasons my girlfriend gave me because I don't give her enough time, because मैं Saturday Sunday भी क्रिप्टो के बारे में कर रहा हूँ because I'm like, बहाने होते हैं मेहदी, ये this is called putting you down easily. ओ तुम टाइप नहीं देते. Yeah, so I'm basically in like 12-14 घंटे दिन में, like we are working hard to kind of do the proper due diligence to make money, like hard work, research and all of that. So I do agree on the latter statement that it is kind of once in a lifetime opportunity, and
and पूरा web revolutionized हो रहा है. Like after this let's discuss about digital real estate, आज किसी NFTs. ने तस्वीर पोस्ट की थी एक रिक्शे वाले की जिसने लिखा था we accept cryptocurrency. Amazing. I love that. When we talk about crypto, yes, a lot of rich people are in crypto, but इतने पाकिस्तानी क्रिप्टो में जो आपको लगेगा इनको इंटरनेट भी नहीं यूज करने आता. You're shocked meeting people के ये तुम क्रिप्टो में पैसे लगाए हुए तुमने. This opportunity for lower middle, even lower classes, और इसका कोई रद्दो बदल है ही नहीं. There is no other opportunity like this for these people. Yep. I am in agreement. Yep. I am in total agreement, 100%. A to Z जो आपने कहा अभी, 100% in agreement. Don't like the guy Waqar Zaka, but I think the latter, what he said, is spot on. This is a once in a lifetime, once in a generation opportunity, and I think we are getting it wrong. I think what we should do is follow the footsteps of India, which we hate, by the way, but we should follow them, what they're doing. Our Bitcoin pe ban laga do, but don't stifle the innovation coming from the altcoins, NFTs. I think हमारी government को ये भी डर लगता है. I think our government will be amongst the last government to kind of invent the CBDC, central bank digital currencies. I think हमारी government के पास ना capacity होगी ना intellectual वो है, तो वो डरे हुए हैं. I think this is coming out of the fact that they're a bit scared that हमारे reserves खत्म हो जाएंगे. People will do that. So yeah. So I think it's coming from that. Foolish वाली बात है. And the thing you say कि जी blockchain में innovation नहीं आ रही. Again, hate the guy, but इधर also I agree with Waqar Zaka कि लोग आएंगे सोचने में यार कि मैं इन्वेस्ट किया मुझे पैसे मिल गए. Then they'll be like अच्छा इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है. तो एक इंटरेस्ट तो डेवलप होगा. अगर even if they come in thinking I'll make a quick buck, then they start analyzing coins, then they start going, they go to token metrics, they see what you're doing, they're like यार मैंने भी ये सीखना है. Maybe they'll do you study. बिल्कुल, yeah, I think that's the correct. कल को वो फिर ब्लॉकचेन में कुछ करेंगे. तुम आते ही उनका दरवाजा अगर बंद कर दोगे कि अपॉर्चुनिटी तुम लोगों के लिए नहीं है, how will they get to 10 when at 1 you're breaking their legs? I agree. And I think जो हमारे यहाँ पे youth भी जो सुन रही है, if you want to do a master's अभी, either do it in computer science or do it in blockchain. Like अभी इस field में, I think there's way more opportunities than any other field. I even include AI and machine learning. Because one of the fundamental issues we human have is trust. आप trust को minimize कर लो, trust को हटा दो, even the AI and ML will come into blockchain. So you are creating the base layer of the whole web. So owning crypto in some way, especially layer 1, is basically owning internet. So I agree. I think हमारी जो youth है, I think they should start exploring this, exploring blockchain rather than Shiba and Doge. But if you start with that, that's fine as well. But yeah, let's just build, let's just understand, let's just learn and explore this. And it's the same as World War II में सब जंगे कर रहे थे. फिर लोगों ने बोला अच्छा मिल बैठ के एक यूनाइटेड नेशंस बना देते हैं. Every country wants control, China wants control, US wants control. But अगर चीजें इतनी decentralized हो जाएं, I think an alternative could be potentially कि यार मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है. Maybe that's acceptable. US को China का control नहीं acceptable, China को US का control नहीं acceptable. But if we live in a world where nobody controls anything, maybe that will be acceptable to every country. Hopefully, maybe. That's a good perspective. Yeah. So you're basically destroying the borders. Yes. Yeah. Which is the end goal, I guess. Which is why I blame the government कि ये जो Balaji also talks about the idea of airlifting. अच्छा, one second. Crypto में I think it's the only sector I've seen. मैं equity research कर चुका हूँ, global macro कर चुका हूँ. Everybody works remotely. Nigeria से बंदा बैठ के US में काम कर रहा है, UK में कर रहा है, and getting the same salary. Exactly. So this is a power of remote, and उतने talent की shortages है, people are fine with it. Like I think in US, I think crypto and I think full stack developers, I think those two sectors are like those two kind of occupations. आप घर से भी बैठ के आपका इतना leverage है दुनिया में, आप वो कर सकते हो. If you don't understand what I'm saying, they are very good thinkers of the world. Naval, I'll say, is one of them. I think if you follow him, he's also like getting 70-80% into crypto. Like he's basically full in crypto. So there is a reason why a lot of people are going full in, because they see this opportunity.
And हम अभी थोड़ी देर NFTs की बात करते हैं. I think NFTs is also one of the primitive that you can just not do innovation, but you can own internet. Like that just concept कि आपके पास इंटरनेट के एक हिस्से की ओनरशिप है, that's also mind blowing. तो let's talk about that. मार्क क्यूबन ने भी by the way recently कहा कि शार्क टैंक के अलावा almost 100% उनकी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में. But yeah, let's get into NFTs. What are NFTs? Yeah, so NFT is a non-fungible token. That's the literal description of it. But think of it like this. एक चीज होती है tangible, एक चीज होती है intangible. हम अगर रियल एस्टेट की बात करते हैं, so let's say your house is different from my house, क्योंकि हम दोनों के घर का इंटीरियर डिफरेंट होगा. But that is tangible. हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं. But what if, let's एक simple example लेता हूँ. Let's talk about JPEG. We can't. एक प्रोफाइल पिक्चर है, we can't feel it, we can't touch it, it's intangible. मगर हर JPEG, let's say there are 2 different JPEGs, और वो जो JPEGs हैं या जो 2 पिक्चर्स हैं, they are different. जैसे हमारे घर के इंटीरियर डिफरेंट होता है, तो वो 2 JPEG डिफरेंट है रेरिटी में. एक बंदे ने टोपी पहनी हुई है, एक बंदे ने टोपी नहीं पहनी हुई. सो लेट्स से विद करेंसी हम लेट्स से $1 देते हैं, $1 देते हैं तो 180 रुपए लेते हैं. इट्स फंजिबल कि $1 180 रुपए में टूट सकता है. मगर NFT आर नॉन फंजिबल. एक टोपी वाली NFT is very different to non टोपी वाली. So you create this dynamic where there is exclusivity. हर चीज एक हो सकती है, and you kind of create this artificial scarcity that can be very unique. तो हमारे यहाँ पे जैसे properties होती है, right? तो आपका बंगले की 10 करोड़ वैल्यू हो, फॉर एग्जाम्पल, मेरे बंगले की शायद 12 करोड़ हो, but that could be because of interior, right? So इसी तरीके से हम डिजिटल दुनिया में जाएं, one real estate in, let's say, Decentraland could be very different, very unique from a real estate in Sandbox, क्योंकि उसके आसपास दूसरे डिजिटल प्रॉपर्टीज बनी हो, या उसका इंटीरियर डिफरेंट हो, या वहाँ पे लोगों को आना जाना डिफरेंट हो. But everything is unique. There is one part. It's very difficult to interchange. So that's the primitive, थोड़ा सा technical primitive of NFTs, and I think it's very unique and it's very different. It involves the element of ownership. हम जैसे tokens खरीदते हैं, you're not an owner. With NFT, you become owner. Tokens are more like coordination mechanism. एक network में हम किस तरह coordinate करते हैं या कौन से rules pass करवाते हैं. But NFT, you literally become an owner, because you have this blockchain में आपके पास एक record होता है कि भाई I own this. This is mine. That's it. It's you can't own this. This is mine. So recently hype है बहुत ज़्यादा JPEG में. Sometimes too much hype. I think 80-90% of JPEG will go to zero. But if you think logically, there's a very beautiful pattern here. With JPEG, you kind of are expressing the fact that हम metaverse में जा रहे हैं, and I'll explain why. अभी हम इंसान 10 घंटे 11 घंटे इंटरनेट पे टाइम गुजारता है. With pandemic, I think पाकिस्तान में तो इतना नहीं, बाहर के मुल्कों में it affected them so much कि जो डिजिटल टाइम लोग गुजार रहे थे कंप्यूटर के सामने, it has popped up massively. So imagine a world where you're spending 14-15 hours in front of a computer. आप डिजिटल दुनिया में 14-15 घंटे हो. So doesn't it make sense for you to show off in that digital world? जैसे हम रियल लाइफ में गाड़ियां शो ऑफ करते हैं, why not just show off in that digital world by having digital NFTs, by having digital real estate, by having digital car. तो जो लोग पुराने ज़माने में रियल लाइफ में शो ऑफ करते थे, now I think as people kind of go into this digital realm, people are gonna show off digitally there. So one of the easiest way to show off is by owning a monkey ape profile picture that you bought it for $200,000. But then another thing is that आप जैसे आप ट्विटर में आपके पास एक बोर्ड एप यार्ड मंकी $4 लाख की तस्वीर लगी हुई है. There are only 10,000 of them because it's NFT. Nobody can mint them. तो let's say अगर आप ट्विटर पे किसी को DM करते हो, they'll only respond to your DM because you have this exclusivity. एक show off mechanism है कि I'm important. I have FU money by spending 400,000 on NFT, and on top of that, you become a part of this exclusive community. So it's kind of also like owning, जैसे कराची जिमखाना की membership है, with that NFT, you're also kind of
getting a membership of a club or exclusive community. So this is the reason why NFTs are beautiful, even though बहुत सारे चिचोरी NFTs इजाद हो रही हैं, मगर there is a very nice primitive to it. I get it 100% because मैंने बचपन में बहुत पैसे पोकेमोन कार्ड्स पे जलाए हैं, मैंने तो I completely understand the concept. सवाल ये है कि मैं अगेन पेंडा आदमी, मुझे कुछ भी नहीं पता. मुझे नजर आ रहा है सब NFT में पैसे छाप रहे हैं. गैरी वी ने कोई 2 दिन में 10 मिलियन कमा लिए, मैंने भी पैसे कमाने. But I wouldn't know where to even start investing in NFTs because मुझे पता ही नहीं कि कौन सी वाली कहाँ जाएगी. There's this book called How to NFT. ये $15 की है. यहाँ आप गूगल करके इसको PDF या गूगल कर लो, आप इसका PDF डाउनलोड कर लो, कंप्यूटर पे पढ़ लो, या 200-300 रुपए दे के उर्दू बाजार से प्रिंट आउट करवा लो. मैंने उर्दू बाजार से प्रिंट आउट करवाई है. So this will get you started and it will teach you कि सिर्फ JPEG NFTs नहीं है, you have digital world, especially gaming में. अगर आप गेमर हो, NFT is amazing. Let me just describe. हमारे साथ एक इशू ये होता था, जैसे वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट खेल रहे हो या डोटा खेल रहे हो या कुछ भी खेल रहे हो, आपने एक मेहनत की, आपने लोगों को मारा, आपने एक स्वॉर्ड बना ली, सही है, मार के लोगों को स्वॉर्ड बना ली, आपने इतना खून पसीना उस पे किया. What if I give you this option to basically sell this sword to somebody who wants to buy it for $50, $100? So NFT allows you to do that. And now we're going to go into this world where this sword cannot just be used in one game, but ये sword उठा के आप काउंटर स्ट्राइक पे भी ले जा सकते हो. वहां पे जो चाका करते हैं या जो knife करते हो, वो instead of knife you can have that sword. So NFT allows all of this unique innovations. आप अपनी मेहनत को मोनेटाइज कर सकते हो, आप अपनी मेहनत को एक गेम से दूसरे गेम में ले जा सकते हो, और आप अपनी मेहनत को स्टोर कर सकते हो. तो लेट्स से वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट बोरिंग भी हो जाता है, यू कैन काइंड ऑफ सेल इट आउट. सो मैंने बचपन में बहुत गेम्स खेली हैं, बहुत टाइम ज़ाया किया है. इफ वी हैव दैट मैकेनिज्म टू काइंड ऑफ मोनेटाइज इट समहाउ, दैट व्हाट NFT allows us. रही बात वेरी गी की, सी JPEGs वाली जो, सी NFT is very broad. You have collectibles, you have music, you have gaming, you have digital real estate, और भी पता नहीं क्या क्या फ्यूचर में चीजें आएंगी. जो JPEGs है, that's just one part of it, and I think it's one of the most, अगर आपने economics पढ़ी है, it's like a Veblen good. It contradicts the laws of demand and supply. यहाँ पे ये होता है कि जितनी ज्यादा प्राइस होती है उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ती है. It's bit like हजारों NFTs हैं. I don't know which NFT will win. This is the most exclusive one. I'll keep buying it even though it's expensive. So that's the concept of Veblen good. So Gary Vee के पास में marketing resources है. He can hype up things. He can make things exclusive and basically make it expensive. So hence why these people will make it big in NFTs. Now the counter argument is they're also एक अभी इंडोनेशियन का था गजाला, क्या नाम था उसका, उसने भी अपनी NFT बनाई. मैं आपको मैं थोड़ी देर में निकाल के आपको दिखाता हूँ. उसने अपनी 1000 तस्वीर ली, सही है, it's a meme, it's funny. उसने अपने हर दिन 1000 पिक्चर्स ली and basically sold that as NFT, और एक पिक्चर अब 4 इथेरियम की है. And it's stupid but it's hilarious. Since it was hilarious, a lot of people found utility in it. वो meme बन गया. Or now there's a community forming around him, and uske NFT is much more expensive than Gary Vee's. So you can be Gary Vee and make money, or you can be somebody who kinds of build community, does comedy, whatever, and you can also kind of go around it. So it's a very interesting primitive. And every picture is 20 lakh rupees. अगर 4 Ethereum में. Yeah, 3 से 4. Like 4, हाँ. 14,000. मैं निकाल के दिखाता हूँ एक मिनट. $14,200, which I think is close to 20 lakh रुपए. अच्छा, और मजे की बात है, दूसरे NFT वाले उसके साथ कोलैब कर रहे हैं, तो वो और एक्सपेंसिव होती जा रही है. Let me kind of show you. मैं अब यही करता हूँ, अपनी मैं इन्फ्लुएंस बढ़ाता हूँ, फिर अपनी कॉमेडी को NFT बनाता हूँ, और फिर उसको 4 इथेरियम. हाँ, तो हम आपके स्टैंड अप अगर कोई शो आप स्टैंड अप अगर करते हो, तो आप उसको NFTs एज ए टिकट फॉर्म शो बेच सकते हो, क्यों नहीं? So instead of buying tickets, you can sell NFTs, and those NFTs will represent tickets of your show. You can also start social token के आप समझते हो शहजाद की वर्थ 5 लाख रुपीस हैं. नहीं, 5 लाख ज्यादा है.
5 लाख ज्यादा, तो होंगी यार वैसे, एक्चुअली ये 5 5 लाख लाख से इज ज्यादा नॉट होगी। दैट, 5 लाख तो से होनी चाहिए I'm मेरे giving यार। an example यार, हाँ। मैं होता मैं आपको ज्यादा देता। सो अगर आपकी कोई वर्थ है, सही है, तो एनालाइज लेट्स, मी करो, मेरा सारे मेरे फाउंडर्स देखो मेरे वीसी बैक कौन कौन कर रहा है, मुझे सारे एनालाइज करके मेरी वर्थ निकालें। या आपका ट्विटर देखना पड़ेगा, यूट्यूब फॉलोअर्स देखने पड़ेंगे। आई थिंक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इलॉन मस्क का एक टोकन कितने का बिकेगा, कि उसकी उसकी सोशल पावर कितनी है। ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये थोड़ी सी चीजें हो रही हैं जो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये मैंने जल्दी वैसे फिगर आउट कर लिया था, इधर मैं अपने आप को क्रेडिट दूंगा कि सोशल कैपिटल की वैल्यू बीइंग मोर देन एक्चुअल कैपिटल वैल्यू, ये मैंने बहुत पहले फिगर आउट कर लिया था। सो यस, इवन दो मुझे ज्यादा ये चीजें समझ नहीं आती, बट इवन अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, लेट्स से शोएब अख्तर है, उसको नहीं पता एनएफटी क्या है, but he can take advantage of the NFT market because he's Shoaib Akhtar and he's built this YouTube giant following. या 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 मगर हाँ हाँ, मगर लेट्स से अगर आपके फॉलोवर्स हैं, जैसे शोएब अख्तर के फॉलोवर्स हैं, ही कैन डेफिनेटली डू दैट। सो या अगर आपके फॉलोवर्स हैं, यू कैन आल्सो डू दैट। पर कभी कभार क्रिप्टो में इट्स अमेजिंग कि इसके अलावा भी कुछ चीजें वायरल हो जाती हैं। जैसे हमारे कितने सारे अंकल मीम बन गए। एक क्रिकेट वाला अंकल थे, सारे जो हाँ, एक फ्रेंडशिप वाली एनएफटी थी, हाँ हाँ वो भी हाँ वायरल हो गई। तो अगर ऐसी चीजें वायरल हो जाती हैं, इट डजंट हैव एनी प्रिमिटिव, इट डजंट नीड टू हैव अ लॉजिकल सेंस, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, हमें हंसाया, हंसने की भी एक यूटिलिटी है, व्हाई नॉट मोनेटाइज इट? लाइक हमारी हंसी की भी एक वैल्यू है ना, लेट्स मोनेटाइज दैट। सो दिस इज 20 व्हाई चांद वेयर बाग जो क्रिप्टो है, इज पावरफुल। कराची से अंदरूनी शहर, कराची से अंदरूनी यस, शहर जाने वाले, apparently he's working with a lawyer right now to turn that into NFT, and कोई काफी heavy, like hundreds of thousands of dollars की उसकी उस वीडियो की अब बर्थ है। हाँ, एक और चीज है, अगर अंकल वाले ये करें कि एनएफटी को फ्रैक्शनलाइज कर लें, मतलब एक एनएफटी के टोकन्स बना लें छोटे छोटे, मैं भी खरीदूंगा। ये मेरा इसी से एक बड़ा रिलेटेड आइडिया है जो पाकिस्तान में फ्लाई नहीं करेगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट रेगुलेशन लोगों को अमीर नहीं होने देती। हमारी स्टेटस को का आइडिया है कि हम अमीर रहें और ये लोग गुलाम रहें। हमने बड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें की हैं। हमारे एक बहुत रेगुलर फॉलोअर हैं शाह आलम साहब, जब हमने लास्ट क्रिप्टो करेंसी पे पॉडकास्ट की थी, उनका एक कमेंट आया था, sorry but this should never have aired, and if aired it should not have delved into trading strategies of cryptocurrency. It will send wrong lessons and many more will lose their shirt inspired by the anticipated returns of 10x and 100x profits. The math in the trading is simple, it's a zero sum game and someone will have to lose money for someone to gain. Most watching this podcast who are here to learn the basics will go back as Neem Hakim Khatra Jan. Rest assured the crash of cryptocurrency will be no different from the 1929 crash of Wall Street. Thoughts? Because that's how most people think, especially of a certain generation. What would you say to somebody like Shah Alam, jo he's coming to cryptocurrency from this perspective? पहले तो मैं इनको ये दिखाऊंगा, एक मिनट, अनेबल आप शेयरिंग कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ मैं। कैसे करते हैं participants? Wait, share screen, multiple. Can you share now? एक सेकंड, You should be able to share. लोग चैट में मुझसे आइवरमेक्टिन पे जो राय पूछ रहे हैं, जैदी साहब मेरी क्यों राय होगी, मैं जो रोगन थोड़ी हूँ। आई डू बिलीव बिग फार्मा करप्ट है, और बिग फार्मा हो सकता है कि जो बेसिक आइवरमेक्टिन जैसी मेडिसिन हैं दैट वर अवेलेबल, उनको जानबूझकर दवाई हूँ अपनी चीजें बेचने के लिए। दैट्स 100% पॉसिबल, बट आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट। जी गजाली एवरीडे ये तो मैं थोड़ा गलत था, 4 इथेरियम नहीं था, कुछ 4 इथेरियम किए। मैं इस बंदे ने मेहदी, अपनी मुझे नजर आ रहा है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, जो पॉर्नहब के टैब्स खुले, मजाक इस एक सेकंड के लिए तो डर गए होगे कि शिट से डैप तो नहीं रह गया। या ये डेस्कटॉप सेटअप है, वो थोड़ा सा मैं कहीं और ब्लॉकचेन। अच्छा, ये जो बॉय है ना, ये तस्वीर है। ये मैं इसके कुछ अभी 3-3 4-4 वो भी हुए हैं। तो अगर आप ये आर्टिकल पढ़ो, वो उस अंकल को मैं ये दिखाता, ये बेचारा सही है, इसने 1 मिलियन कमा लिया, एंड व्हाई नॉट, ही वाज ब्रेव इनफ टू डू व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड कुडंट। आई मीन ये मेरे स्कूल में होता तो बुली होता हमसे,
और इसने 1 million कमा लिए इन It's तस्वीरों से. really a picture of me standing in front of the computer day by day. Wow, He made dude. it. Yeah, he made it. Plus, I would also say कि हमने इस podcast में कोई shilling नहीं की, कोई coin की shilling नहीं की. It was very educational. It was, in fact, a lot was said about education. Even the start point was कि मैं masters कर रहा हूँ, and I showed you the book as well. So I think this is the mindset. I think uncle को शुरू से ये video देखनी चाहिए. I think बीच से आए 2 minute video देखे मतलब हाँ ये coin की shilling कर रहा है. So yeah, I think it's a wrong mindset, and I think this is where opportunity lies. Now मैं अब coin की shilling करता हूँ. If a lot of people think like that, and if you don't think like that, and you're right, you'll make a lot of money, because once these type of people realize how big of an opportunity crypto is, you'll make money, you'll do well in this world. And yeah, so that's my end message. A lot of people were naysayers when it came to iPhone or internet. आपने देखा होगा ये internet भी लोगों ने कहा ये बकवास है, facts की तरह है. One of the Nobel Prize winning economists, Paul Krugman, said it's a fade. Those are 2-3 में. It's a fade. It will just die out like facts. And now सबसे ज्यादा पैसा वो ट्विटर से कमाता है. That's the funny bit. तो अंकल की भी कुछ मजबूरियां होंगी. किसी ने पूछा what is mining and has to do with an enormous use of waste of electricity. Interestingly, अभी मैंने आज ही खबर देखी कि यूएस का जो सबसे पुराना रिन्यूएबल रिसोर्स का एक प्लांट था वो बंद होने वाला था, but they turned it into Bitcoin mining because that was the only solution. So I also have thoughts about this, but yeah, what are your thoughts on ये criticism के जी बड़ी electricity waste करती है mining? It does. I don't like Bitcoin. I actually genuinely don't like Bitcoin. I think Ethereum or smart contract platforms are the way forward. It's just like this, right? कि आपको Microsoft या Facebook या Twitter में invest करना है या gold में invest करना है. Now when you go to gold की भी mining होती है, उसमें भी तेल खर्च होता है, उसमें भी a lot of resources are used. आप ये भी argue कर सकते हो जो gold की mining के resources हैं वो अफ्रीका के बच्चे के लिए वहाँ पे जो बच्चे भूखे होते हैं हम उसको devote करते हैं. So that I'm not personally big fan of Bitcoin. I feel like it's a portfolio hedge. अगर दुनिया में ऐसा हो जाए सिनेरियो कि दुनिया में हर इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए जैसे वेनेजुएला में आया है, तो आई थिंक बिटकॉइन कैन बी समथिंग व्हिच इज सो डिसेंट्रलाइज्ड इन द वर्ल्ड इट कैन एक्ट एज स्टोर ऑफ वैल्यू. बट आई 100% agree with the fact that a lot of mining energy is wasted. And the algorithm defense है ना कि देखो, so in the US I think the maximum an electricity can be taken from somewhere is 400 miles या 4000 miles. बिटकॉइन का ये फायदा है कि वोल्केनो है, जियोथर्मल है, विंड मिल्स है दुनिया के खुद में जहां से इलेक्ट्रिसिटी कभी शहर में नहीं आ सकती, न्यूक्लियर वहां बना लो बिटकॉइन माइनिंग. या वहां पे भी करते हैं, जैसे न्यूक्लियर की सब्सिडी दी हुई है. लेट्स से बहुत सारे यूएस स्टेट्स में जो न्यूक्लियर एनर्जी है उस पे क्या हुआ है, इट्स काइंड ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल काइंड ऑफ एनर्जी. आप उस पे कर सकते हो. बिटकॉइन हैज हिज ओन चार्म. आई पर्सनली डोंट like Bitcoin that much because I'm more of like an innovative guy. What's the next shiny thing that can change the world, change people's life? I feel like Bitcoin is more like store of value. हमारे अम्मा अब्बू के ज़माने में गोल्ड की तरह था. So I'm in that space के मैं क्रिप्टो में इतना आगे चला गया हूँ कि I feel like Bitcoin is like दादा ज़माने के जो गोल्ड होता था उस जैसा है. But isn't it decentralized a lot? Most decentralized currency in the world. It's most decentralized currency in the world. मगर जैसे मैंने पहले कहा था, there is always a trade-off. Decentralization, security, and scalability. Since they went for decentralization and security, they forget about scaling. So scaling से मुराद सबसे दुनिया की slowest transactions. It became like gold. And plus on top of Bitcoin, you don't have smart contract. मैं एक बंदे की बात कर रहा था, मुनीब, who made Stacks. हाँ, उसने basically he's trying to get smart contract on Bitcoin by making that possible. But Bitcoin on its own is basically it's not smart. समझो वो पुराने जमाने के नोकिया के फोन की तरह हैं, reliable, durable. अब गिराओगे फ्लोर टूट जाएगा, मोबाइल नहीं टूटेगा. It's like that. But now you have like phones like this. Like I think Ethereum is like this. You have a flip. You have a flip. Yeah. So world is going in that direction, and I will say Bitcoin is like that. Maybe in 30-40 years,
Bitcoin will have value because it became antique, it became the most durable thing in the world. So that's how I view it. I'm not a Bitcoin maxi. In fact, I'm not a maxi at all. I think innovation is brilliant. जहाँ से आए अच्छा है. इंडिया ने क्यों बैन किया बिटकॉइन? Yeah, so वही पाकिस्तानी वाला चक्कर के since it's going after store of value, so since it's more decentralized, safe, people will be like, you know what, हम थोड़े से Indian rupees को sell out करके Bitcoin में डाल देते हैं, या let's say there is an inflation, या let's say कोई कभी civil war हो जाए. If some of our Indians audience are saying कि मोदी ने थोड़ा सा उनका दिमाग घूम गया, एक दो लोगों को मार दिया, civil war हो गई, people will be like, sell Indian rupees, buy Bitcoin. So let's just kind of cut that thread अभी से. So it wasn't just India. I think उसने भी बैन कर दिया. चाइना ने माइनिंग बैन किया है ना? चाइना ने माइनिंग भी बैन किया. आई थिंक बिटकॉइन की ट्रेडिंग भी बैन कर दी. अच्छा. Yeah, and basically when you're kind of now this is the thing, China ने mining ban की. It was one of the most beautiful things that happened. China में सबसे ज़्यादा mining centralized थी. Now it became even more decentralized. So in the long run, Bitcoin benefited because of all decentralized हो गया. There is no one point of failure. So this is the beauty of Bitcoin. एक country बंद करे, दो country बंद करे, शायद और decentralization फैल जाए. Now globally अगर ये हो जाए कि 80-90% of government bans it, then you'll have this issue कि सब लोग चुपके से अपने कंप्यूटर में चुप के चला रहे होंगे. But I don't think it can ever die down. It's so that decentralized. Idea of safety and security, ये तो अच्छी बात है, पब्लिक लेजर है, सबको पता चल जाता है. बट ऑन द फ्लिप साइड, अगर सबको पता चल गया कि जी मेहदी तो सीक्रेटली 10 करोड़ बिटकॉइन है, इसका हार्डवेयर वॉलेट इसके घर पड़ा हुआ है और ये तो यहाँ रहता है, ये इन्फॉर्मेशन भी इजीली अवेलेबल है. सो ऑन द पब्लिक लेजर, isn't that information very easily hackable? मुझे पता चल जाएगा मेरे पास कितने बिटकॉइन है. Hackable नहीं है, because I have the keys. You can't hack that. I mean, I can't access the Bitcoin, but can't I know how much you have? You will know कि मेरे पास कितना है. And I know where you live. So now you know. मगर मेरा wallet ID अभी तक नहीं पता. खैर, अगर even if you know, I think government knows that they can track. People were like, Bitcoin laundering के लिए use होता है, trader financing के लिए use होता है, but everything is on ledger. You can track it. But there are ways around it. Not for Bitcoin, but let's say there are things on Ethereum called Tornado Cash, where you can add a privacy layer. So those people who not only care about decentralization, but also think privacy is a human right, they can use a privacy layer called Tornado Cash in Ethereum. Cosmos पे एक project है Secret Network, उसमें smart contract भी private है. So it's up to me to मुझे जब अगर टैक्स दिखाने होंगे तो वो मैं खोल दूंगा, नहीं टैक्स दिखाने होंगे तो बंद कर दूंगा. Nobody can see what I'm doing. But let's say अगर मैं regulators बोलता है टैक्स दिखाओ तो वो मैंने खोल दिया. So there's a lot of innovations going on. Not only there is a innovation on decentralization front, but privacy के front पे भी हो रही है कि if you think privacy जैसे हमारे मुल्क में होता है कि government ने TV बैन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. So in smart contract, if you have that privacy layer कि हर बंदे की privacy preserved है, then you can do crazy stuff. But I think not all government will want that. So we'll have like a pseudo privacy कि कहीं privacy होगी, कहीं privacy नहीं होगी. One thing I can definitely show कि जहाँ privacy होगी वो इन applications में होगी. So for example, अगर आपको किसी को बताना है कि Mehdi, like instead of telling Mehdi is 27 years old, you can say Mehdi 25 से 30 साल का है, Asian ethnicity का है, सही है. Even though you are giving them the information, Mehdi 27 hai, Mehdi Pakistani hai, but they can only view this information. उसको specific information नहीं आएगी तो आपकी privacy intact रहेगी. So these are some of the crazy stuff that is also happening. Is this what are they called? Pseudonymous networks? Is that what it is? नहीं, privacy network कुछ totally pseudonymous है, जैसे partially pseudonymous है, जैसे secret network है, उसमें आपकी मर्जी है कि आप कितना दिखाना चाह रहे हो. Polkadot में project है Kilt, Polkadot और Kusama में, but then there are projects which are completely privacy focused such as Zcash and Monero, और उसमें smart contract नहीं है, सिर्फ currency है. So let's say अगर आपको not financial advice या गवर्नमेंट से मैं पंगा नहीं ले रहा, आपको मनी लॉन्ड्रिंग या कुछ गंदी हरकतें करनी है तो आप जी कैश और मनेरो में कर सकते हो और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा. अच्छा, ठीक है. ओनली फैंस में अगर लोगों को पैसे देने हो तो मैं जी कैश और नहीं, आई वुड से सीक्रेट नेटवर्क में करना, क्योंकि आई थिंक ओनली फैन वहां पे बन नहीं सकता. सीक्रेट नेटवर्क पे एक्चुअली ओनली फैन बन भी सकता है. यार इस ओनली फैंस एनएफटीज, अगर मुझे पता हो
कि इस वक्त इन्होंने सिर्फ मेरे लिए ये किया है. I think that has a lot of value. This is why VCs make a lot of money. We know what's going to happen. तो सिंस सब हमने पढ़ी लिखी बातें करी ली और लोगों ने 3-4 दफा पूछा है, दे दे यार, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बट व्हिच ऑल्ट कॉइन्स डू यू फील लाइक कि यार ये है पोटेंशियल? I think थोड़ी मार्केट अभी एक्सपेंसिव है, so I would advise के cautiously करना. Anything I suggest on my like मैं थोड़ी चीजें शेयर कर देता हूँ. I think this will be very educational as well for people. One second. Anonymous student ने पूछा भी था कि how do you check, how do you know when you analyze a coin, कि क्या क्या चीजें देखने वाली हैं, but I think we've already addressed that. मैं एक छोटा सा आपको मैं ट्रेलर दिखा रहा हूँ. So you can like not only learn but also make like informed decision. Like हर कोई चीज, there are no free lunches. Everything has some risk involved, right? तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ये देखो कि भाई मुझे 3 गुना प्रॉफिट हो सकता है मगर मैं बैंकक्रप्ट भी हो सकता है, मेरी चड्डी भी हो सकती है. So in that scenario I think you need to be one of those person to kind of evaluate. तो मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, एक सेकंड. प्रतीक गांधी ने कहा है रिस्क है तो इश्क है. बिल्कुल, एग्जैक्टली. आई थिंक इतना बूमिंग सेक्टर, आई थिंक 20-30 साल में इट्स गोना 50-60x because of the innovation going on. So it kind of makes sense कि अगर इतनी asymmetry है रिस्क में, if I lose $1 but potentially can make $50, maybe मैं 4-5 अच्छे coins लेता हूँ, 3 फारिग भी हो जाते हैं, मैं 1 or 2 of them does 50-60x, I make a lot of money because of this thing called asymmetric risk return. तो मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ. आई थिंक टोकन मैट्रिक्स ये बड़ा एक जबरदस्त इनिशिएटिव ले रहा है. इनका थोड़ा बिजनेस मॉडल डिफरेंट है. तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे, सही है, देयर इज अ प्लेलिस्ट ओवर हियर कॉल्ड डीप डाइव्स. सही, ये मैंने डीप डाइव किए और मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ. ये 35 मिनट की वीडियो है और उसमें मैंने एक एक चीज ब्रेक डाउन की है. ये आपका, इसमें मैंने ये देखें, ये मैंने समझाया कि किस तरह हो रहा है. ये मैंने टेक्निकल थोड़ी चीजें बता दी, ये मैंने आर्किटेक्चर बता दिया, ये मैंने और थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि टेक्निकल चीजें किस तरह हो रही हैं. मैंने फिर टीम का बताया कि भाई ये टीम क्यों अच्छी है, ये क्यों बुरी है, क्योंकि एज अ स्टार्टअप आप बेसिकली टीम पे बैट कर रहे हो. क्रिप्टो भी काइंड ऑफ स्टार्टअप एनवायरनमेंट है. फिर मैंने इन्वेस्टर की लिस्ट बताई, ये सारे वीसीज इन्वॉल्व हैं. फिर मैंने टोकनॉमिक्स बताया कि टोकन की डिमांड क्यों बढ़ सकती है, कम क्यों हो सकती है. फिर उसके बाद मैंने और भी बताया कि सप्लाई क्यों कम हो सकती है, सप्लाई बढ़ भी क्यों सकती है. फिर मैंने थोड़े ऑन चेन मेट्रिक्स बताए कि ऑन चेन क्या हो रहा है, कि यूजर्स बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, कितने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहे हैं, इकोसिस्टम किस तरह ऊपर नीचे हो रहा है, वैल्यूएशन क्या है, दूसरे कॉइन कितने सस्ते हैं कितने महंगे हैं. तो मैंने यहाँ पे इथीरियम, बाइनेंस से सबकी कंपैरिजन की और बताया कि एवेक्स थोड़ा सा सस्ता है, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस. और फिर एंड में मैंने टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ी सी की. फिर प्राइस प्रिडिक्शन भी किया कि अगर ये टेक्निकल हिट होता है तो यहाँ पे प्राइस जा सकती है. और फिर मैंने और भी फ्यूचर की भी चीज़ें बताई कि ये हो सकता है उन्हीं की रिपोर्ट पढ़ के. सो इतने डेप्थ में जाके मैंने चीज़ें बताई हैं. सही है, तो आप अगर डीप डाइव फॉलो करते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. इसके अलावा आप मैं कुछ कभी कभार अल्फा लीक करता हूँ अपने ट्विटर पे, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी एट Mehdi Farooq 2. यहाँ पे मैं कभी कभार चीज़ें बताता हूँ, नॉट ओनली एजुकेशनल बट सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट आइडियाज आई हैव. सो फॉलो मी. कभी कभार जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आती है, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट रोल, टोकन मैट्रिक्स इज हायरिंग. तो ये सारी चीज़ें हैं. What would people need to be educated in? So अगर किसी को करना है टोकन मैट्रिक्स पे नौकरी, do they need a master's in blockchain? No. I think first and foremost they should be passionate, not just about making 100x 50x return, but just passionate about innovation. कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, and then also being passionate about कि भाई ये इस तरह होता है, and just knowing the basics of blockchain and basics of investing. मेरा background computer science से नहीं है. I'm trained in economics. मैंने UK से economics में bachelor's किया है, then I did CFA, masters in finance and investment, and then I was just passionate. I read a lot of report. I just did, मैं YouTube पे बहुत videos देखी हैं, मैं different articles पढ़ता था, and then I applied.
So मेरी जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की स्किल्स हैं, I try to apply those, and जो मेरी weaknesses थी क्रिप्टोग्राफी में, कंप्यूटर साइंस में, I try to learn those from first principle. And then I said, you know what, I want to learn more. So I am also doing a master's and just reading books here and there. The reason I want to do a master's is crypto की books इतनी अच्छी नहीं है Amazon पे. Like not a lot of people know about this. It's a very nascent sector. 2-3 साल में everything is about Bitcoin, and I think Bitcoin it's just old school बेकार सा दादा के जमाने वाली चीज है. A lot of interesting innovations are happening, especially. I'm a Bitcoin believer. I believe in it. Yeah. Even though I don't believe in it, I still have not financial advice, I still have 2% in my portfolio, just in case अगर दुनिया तबाह हो जाए या गुर्बत आ जाए या अल्लाह ना करे कुछ ऐसी मुसीबत आ जाए. In that case, I think Bitcoin can show its true color. So I have very small allocation. I'm mostly layer 1 fan. I love layer 1. I think these are going to be fangs. Facebook, Amazon, Microsoft for next 10-20 years. So आप उसमें Cosmos देख लें, Avalanche देख लें, Near देख लें, Solana देख लें, Cardano मत देखें, Matic देख लें. A lot of जो हमारे crypto influencers हैं, they're all heavy on play to earn games, but you're like बकवास है. यहाँ पे कहाँ पे पढ़ा? ट्विटर पे? हाँ, बिल्कुल. I've been following you, man. Yeah. So मैं समझता हूँ जैसे DeFi में भी ये था. शुरू में जब DeFi आया था, it was like the booming sector. अच्छा बिल्कुल सिंपल लगता है. आप जब गेम खेलते हैं, आप गेम क्यों खेलते हैं? Like it's because firstly there's this element of competition कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, या because there's unexpected things happening. जैसे मैं GTA खेल रहा हूँ, मैं मिशन कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एकदम से कुछ हो गया, दादी अम्मा मर गई for example. So there is unexpected elements that kind of gives you dopamine release. So ये आपके serotonin और dopamine और अच्छे हार्मोन्स हैं, वो unexpected events से रिलीज होते हैं. Now play to earn एक ऐसी गंदगी है ब्लॉकचेन में कि आप बेसिकली गेम खेल रहे हैं नॉट टू एंजॉय बट टू अर्न. और वो जो अर्निंग एलिमेंट है वो ये होता है कि लेट्स से आप एक गेम खेल रहे हैं, गेम का एक टोकन है जैसे FX टोकन फॉर एग्जांपल. आप बस खेल रहे हैं, आपको FX टोकन मिल रहा है, पर FX टोकन की एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं है. इट्स बिट लाइक पॉन्जी. आप खेल रहे हो, आपको मिल रहा है and then you can basically sell it. So technically the FX token has value of 0, but it's just the hype around it that gives it value. So you're just not enjoying game, you're just playing it for the heck of it. और ये अभी Axie Infinity के साथ भी हुआ, it was amazing and everything is good, but now उनका revenue गिर रहा है आस्ते आस्ते, because a lot of people played that game not for fun, just played it for money. So once the money is made, जब token emission, हमेशा token की emission होती है, मैं 5 लाख token रखे हैं earning के लिए, वो जब खत्म हो जाते हैं you don't get more tokens. So people run away from that game and go to another game. So that's the reason why I think it's not sustainable. That's why I don't particularly like that. If there's a game, let's say GTA जैसी game है, I think they will do that. वो लोग NFT निकालते हैं, वो लोग play to earn add करते हैं, and they also have amazing graphics and amazing gameplay. Boom, then you have a solid project that ticks everything. So yeah, maybe the reverse. अगर Fortnite ने I believe already शुरू कर दिया है. So if people are already plugged into Fortnite and they're playing and they get to earn stuff and get exclusives as well, that's a win-win-win-win. Yeah. I think let's say हम दोनों आपस में खेल रहे हैं. I put $10, you put $10. Whoever wins gets the $10. I think that's the best business model even in crypto. So yeah, it increases the element of competition. Fortnite, I don't know वो play to earn किस तरह कर रहा है. कि is there a fourth token type दे रहा है, or maybe I'm wrong. मैंने कहीं now this is the thing. I don't play Fortnite. This is the thing. Like the people, why they like play to earn is that they can earn that token in the game and sell it in the exchange. Binance में जाके बेच दिया. So you need a game that Fortnite I don't think will facilitate that. If they do, that will be amazing. आपस में एक दूसरे का खेलो. We bet on each other. And then whoever wins that token and then sell it. I think that's more sustainable. Play to earn, I'm not that bullish unless the gameplay is amazing. Crypto में बहुत सारी bullshit आ रही है, like shit graphics, horrible gameplay, but people खेल रहे हैं because उनको पैसे मिल रहे हैं. I don't think that's sustainable. But अगर उनको पसंद है, do it. But I think होगा ये कि 6 महीने खेलेंगे, फिर दूसरी गेम में जाएंगे, फिर तीसरी गेम में जाएंगे, फिर चौथी गेम में जाएंगे, and eventually games will realize that this is not a sustainable model, and if you own those cryptocurrencies, you're screwed.
Do you have a similar take on the metaverse games as well? कि अगर सैंडबॉक्स और माना इस वक्त इंटरेस्ट है, पैसे भी आ रहे हैं, बट कल को अगर फेसबुक मेटा लॉन्च कर देता है एंड एवरीबॉडी इज लाइक गुड बाय सैंडबॉक्स. आई थिंक हम मेटावर्स में थोड़ा अर्ली आ गए हैं. आई थिंक 4-5-6 साल आगे की चीजें अभी से आ गई हैं. यूजर इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है, यूआई यूएक्स शिट है, it's not that good, but I think this is the way forward, क्योंकि हम 10-12 घंटे अभी से गुजार रहे हैं इंटरनेट पे. And let's say I'm working remotely, I'm having this issue even on Zoom कि मैं अपने colleagues के साथ 3D interaction किस तरह करूं. कि let's say I'm wearing a VR and we kind of share this moment where I'm doing a project and showing it to them, and I kind of feel it. So I think metaverse की office applications बहुत ज़्यादा होंगी. People are not realizing. Now the way I think is Facebook will capture some market share, but it won't be the major one. Primarily because Web3 is all about ownership. Facebook will not want कि वो metaverse की एक जमीन है वो कोई और खरीदे, या let's say NFT है वो किसी की और हो, या metaverse में जो बंदे जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, spend to earn, for example, हम नया primitive इजाद करते हैं, spend to earn. Facebook won't do all of that. Facebook will be like ये मेरा centralized है, और basically तुम जो भी इसमें करोगे I own it, and I think it's a bit dangerous. It's like living in a country which is kind of ruled by a dictator. Pakistan, so basic Pakistan में रहना. Yeah, basically वो चाहे let's say शहजाद के जोक्स पसंद नहीं आए या शहजाद ने कोई उल्टपटांग बातें की, उसको मेटावर्स से रिमूव कर दिया. Now imagine a world Pakistan. Yeah, so this is this is one of the reason why I think people might initially buy the hype, but then will be like, yeah, ये तो कभी भी किसी को भी डिस्कनेक्ट कर सकता है. For example, ट्रम्प बहुत ज्यादा मशहूर हो गया मेटावर्स में, वो पॉलिटिकल गैदरिंग कर रहा है, सब लोग जमा हो गए, और फेसबुक डजंट लाइक इट बिकॉज ही इज रिवोल्टिंग अगेंस्ट फेसबुक, वो उसको हटा देगा. So that's the reason why decentralization is very important. Hopefully we see this decentralized vision. लोगों की पावर, अब VCs और अमीर लोग हैं वो ये भी टेक ओवर कर लेते हैं, या हम एक्चुअल पीपल पावर देखते हैं. थैंक्स मेहदी, दिस वाज रियली इंफॉर्मेटिव. बड़ी हमने चीजें सीखी. वी डिडंट जस्ट डिस्कस शिट कॉइंस एंड हिट कॉइंस. Yeah, pleasure is all mine. Thank you. No, thanks a lot and thank you everybody for listening. आप कोई जाते हुए मैसेज देना चाहेंगे आवाम को, हमारी यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, सिर्फ आपके दोस्त ने क्या बोला वो कॉइन्स नहीं खरीदो, जाके आप रिसर्च करो, यूट्यूब पे जाओ, टोकन मैट्रिक्स पे सब्सक्राइब करो, डीप डाइव्स देखो, मुझे फॉलो करो. आई डू दीज ट्विटर थ्रेड्स बट आई ट्राई टू मेक श्योर कि आई ट्राई टू मेक इट कंसाइज. सो आई थिंक दोज विल बी द थिंग्स यू शुड डू, and then decide, should I buy, should I sell, and not relying on other people's information. I think misinformation is तरीके से बहुत फैलती है. Good. And anything said over here is not financial advice. Again, none of this is financial advice. खुद अपनी रिसर्च करें, पैसे डालने तो डालें, नहीं डालने तो नहीं डालें. Hopefully crypto is the future, whether you get on this train or not. ट्रेन निकल चुकी है और ट्रेन आगे जा रही है. गवर्नमेंट्स जो हैं वो खौफजदा हैं और गवर्नमेंट्स को खौफजदा होना चाहिए, बट दीज बैन्स आर टेम्पररी. You can't stop technology as much as you try. Thank you so much, Mehdi, and thank you everybody for listening. Take care. Bye-bye. Thank you, Shehzad.